और फर्स्ट लेग का इख्तिताम 2 दिन के गैप के बाद नेशनल T20 फिर से आपको दिखेगा एक्शन में। और कोई भी कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ रिकॉल ऑफ द पॉइंट्स टेबल। सो नदन की जब हम बात करते हैं, मुल्तान लेग में डोमिनेशन दिखाई नदन ने 10 पॉइंट्स के साथ कंफर्टेबली बैठी हुई है वो टॉप पे। एक मैच हार के सदन 8 पॉइंट्स के, एक मैच हार के बलोचिस्तान बैठी हुई है थर्ड पे और सेकंड पे बैठी हुई है खैबर पख्तूनख्वा एक मैच हार के 8 पॉइंट्स के साथ। फिर 6 पॉइंट्स के साथ आपको दिख रही है बलोचिस्तान थर्ड पे और थर्ड टॉप में, और जो बॉटम 3 हैं उन दोनों में बहुत बाइफर्केशन है क्योंकि 2-2 पॉइंट्स के साथ सिंध बैठी हुई है फोर्थ पे एंड देन सेंट्रल पंजाब नंबर 5 पे एंड इन दी एंड सदन जो कि एक भी मैच नहीं जीत सकी और अभी उनको सारे मैच जीतना जरूरी है वरना फिर वो दूसरी टीम्स के लिए पार्टी स्पॉइलर हो सकते हैं। सो डिस्कशन का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे 2 स्पेशल गेस्ट अजहर अली एंड सना मीर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सो नदन की जिस तरह परफॉर्मेंस रही अजहर पूरी मुल्तान लेग में, जिस तरह डोमिनेशन शो की है उन्होंने, आपको लगता है कि अब यहाँ आके पिंडी क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, यहाँ आके और ज़्यादा डोमिनेशन दिखेगी? बिल्कुल, सबसे 2-3 फैक्ट्स हैं जो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है थ्रू आउट लास्ट ईयर भी, इस साल भी। एक तो उनकी ऑलराउंड एबिलिटी, उसके अलावा उनके पास इन फॉर्म बैट्समैन हैं। हैदर अली परफॉर्म कर रहे हैं ज़बरदस्त, ज़िशान मलिक हैं, उसके अलावा शदाब खुद एज ए बैट्समैन बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग अटैक देखा जाए तो 5 बॉलर्स उनके जो खेलते हैं वो सब इंटरनेशनल बॉलर्स हैं और ऐसा नहीं है कि वो T20 पे बड़े हाई रेट किए जाने वाले बॉलर हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त उनका बॉलिंग यूनिट है, वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, चाहे छोटा टोटल हो, 150 हो, 170 हो, वो डिफेंड करने जानते हैं। उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट एक यंग फिट साइड है और आपको फील्डिंग में नज़र आती है, वाइब्रेंट नज़र आती है, एनर्जी नज़र आती है। तो एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है और इट्स वेरी वेल लेड बाय द कैप्टन शदाब। अब होपफुली इमाद भी आज आ जाएंगे और इट्स वेरी वेल कोच्ड एज वेल। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक कम्बिनेशन बनाया है, सिर्फ नामों पे नहीं जाते, डिफरेंट कम्बिनेशंस भी ट्राई करने से घबराते नहीं हैं। तो आई थिंक एज ए टीम वो बहुत अच्छा इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं। एग्जैक्टली एक परफेक्ट मिक्स है यूथ का और एक्सपीरियंस का। बट सना मीर ने आज से हमें ज्वाइन इन किया है। सना, सबसे पहले तो वेलकम टू रावलपिंडी स्टेडियम। और थैंक यू सना, सो मच। जिस तरह का मुल्तान लेग में हमने जिस तरह के मैचेस देखे, हाई स्कोरिंग मैचेस, लास्ट बॉल फिनिशेस, इतनी तेज आउटफील्ड, क्या अब रावलपिंडी लेग में भी हम कुछ इसी तरह एक्सपेक्ट करें? आई थिंक पिंडी स्टेडियम ने हमेशा इट हैज़ लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस। अगर आप देखें यहाँ पे हमेशा हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं और इस वक्त दोनों टीम्स, बाबर के आने से जब बैटिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो दोनों टीम्स का आज मुकाबला अच्छा होना चाहिए, जो कि नज़र आ रहा है। क्योंकि नॉर्दर्न तो बहुत फॉर्म में है बट होपफुली बाबर के आने से जो एक मोराल बूस्टर है और जो बैटिंग का बैलेंस है जो कि आउट हुआ था बाबर के ना होने की वजह से, होपफुली वो आज वापस आएगा। एग्जैक्टली। सो बाबर करेंगे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पंजाब को और नदन को करेंगे इमाद स्ट्रॉन्ग। सो ये हमने देखना है जो जिस तरह का कॉन्टेस्ट होना है। बट अभी अगर हम बात करें कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर टुडे, सो पिच के बारे में जानते हैं फ्रॉम नन अदर देन वसीम अकरम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल T20 सेकंड लेग, इस वक्त जो टीम लीड कर रही है वो नॉर्दर्न है, सारे के सारे मैच जीती है। उनका मैच है सेंट्रल पंजाब से यहाँ रावलपिंडी में। और ये जो पिच है और ये जो ग्राउंड है, ये PSL में हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड थी, ऑलमोस्ट 9.60 पर ओवर इस पे स्कोर था। और टीमें यहाँ पे पसंद करती हैं कि बैटिंग सेकंड करें। अब देखें ये दोनों टीमें क्या करती हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द पिच। ज़बरदस्त पिच लग रही है। मुझे क्या इस पिच पे पसंद है कि इस पे जो घास है उन्होंने रोल किया हुआ है। ज़्यादा घास नहीं है, काफ़ी कम घास है। इसका मतलब है कि गेंद इतना टर्न नहीं होगा, गेंद बल्ले पे बड़ी आसानी से आएगा। और जो कि हमने रैकेट देखा कि 2 दफ़ा PSL में 180 प्लस बड़ी आसानी से चेज़ हुआ है। और मेरे ख्याल में जो भी टीम यहाँ पे पहले टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली कोशिश करेगी कि बॉलिंग करे। आज भी एक्सपेक्ट करें, इसका मतलब कि हाई स्कोरिंग मैच होंगे हेड टू हेड जो इन दोनों टीम्स का है। जब पहले खेले थे तो नॉर्दर्न ने 35 रन से जीत हासिल की थी, बट आज कुछ सिनेरियो डिफरेंट है क्योंकि सेंट्रल पंजाब का जो एक मसला था ओपनिंग स्टैंड का, कामरान को कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था। अब बाबर के आने से हम बाबर की तो कैपेबिलिटी जानते ही हैं सर। बिल्कुल, बाबर टॉप बैट्समैन T20 ग्रेड का, और उसके आने से आई थिंक इट्स अ मोरल बूस्टर फॉर द टीम। और जो थोड़े थोड़े मार्जिन जो उनके रह रहे थे, आई थिंक उससे ये बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि बाबर अगर सेट होता है तो इनिंग को आगे लेके जाना चाहता है, बड़ी इनिंग खेलना जानता है।
दूसरी तरफ मैं नॉर्दर्न की अगर बात करती हूँ सना, तो रेगुलरली बॉलिंग उन्होंने फास्ट बॉलर से स्टार्ट की, मगर लगता है कि आज वो सरप्राइज फैक्टर आएगा क्योंकि इमाद आ गए हैं। सो इमाद से बॉलिंग शुरुआत करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक इमाद का रोल बड़ा क्लियर है टीम में। जिस भी टीम में वो खेलता है वो हमेशा नई बॉल से और बड़ा टफ टाइम देते हैं बैटर्स को। सो आई गेस उसके आने से ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। पहले ही बॉलिंग अटैक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक कोचेस को बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा आज टीम को खिलाने में, क्योंकि इतनी कंसिस्टेंट टीम परफॉर्म करी और सब रन्स कर रहे हो, बॉलिंग अच्छी कर रहे हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। बट क्योंकि इमाद ने पहले भी जिताया है उनको एज अ कैप्टन, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी मुश्किल है जो पड़ रही है नॉर्दर्न को, बट बाबर और इमाद दोनों मौजूद हैं टॉस के लिए विद सिकंदर बख्त। Hello and welcome from Rawalpindi, the Rawalpindi Cricket Stadium, and match 15 of the National T20. We've got more action lined up for you guys, and time for the toss. Northern versus Central Punjab, and they've got their regular captains back. We've got Imad Wasim, the captain of Northern, Babar Azam, the captain of Central Punjab, and Mohammad Anis, who's the match referee. So it's Imad who's got the coin, and Babar will call. Head is the call. Northern has won the toss. Okay, so Northern have won the toss. Imad, what will you like to do? We're gonna bat first. बैट करेंगे। सबसे पहले तो ये कि एक ऐसी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं जो 5 में से 5 मैच जीती हुई है, तो एक आसानी भी होती है। व्हाट वैल्यू यू फील कि और कर सकते हैं यहाँ से कि टीम जो है वो फाइनल तक जाए? आप 5 मैच जीते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं टूर्नामेंट ख़त्म हो गया है। स्टिल लॉन्ग वे टू गो। अभी क्वालिफाई तो नहीं किया आप, और मैचेस आपने खेलने जीतने। सो इंटेंसिटी हमारी बहुत अच्छी है। यही की है कि इंटेंसिटी इसको और अच्छी करें, फील्डिंग इंप्रूव करें, प्लस जो स्किल लेवल है हमारे उसको मेंटेन रखें। विकेट अच्छा लग रहा है, क्या स्कोर आपको लगता है होना चाहिए यहाँ पर? पिंडी में यहाँ पे काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं। विकेट बहुत अच्छा है। आई थिंक एनीथिंग ओवर 180 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। हमारी बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, सो वी आर लुकिंग ओवर 180। क्या चेंजेस टीम में हैं? आप तो आए हैं, उसके अलावा क्या चेंजेस? चेंजेस यही है कि हैदर तो नहीं खेल रहा अनफॉर्चुनेटली, अभी भी वो 80% फिट है। आई थिंक नेक्स्ट मैच में अवेलेबल होगा। सो यही चेंजेस हैं। लास्ट गेम में मुझे इतना आइडिया नहीं है कौन कौन था, लेकिन अभी 3 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं। आमिर, सोहेल, तनवीर और हारिस रऊफ, और मैं और शताब बॉलर्स हैं, और बाकी उसी तरह की टीम। ठीक है, गुड लक। थैंक यू। Imad Wasim, the captain of Northern now. Babar Azam, welcome to the National T20. टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही प्लान था? नहीं, मेरे ख्याल से पहला मैच है तो थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा था, थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा था, तो प्लानिंग यही थी बॉलिंग करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉस से हार गए, लेकिन फिर भी बॉलिंग आ गई। थोड़ा ट्रैवल करके आए हैं, लेकिन जिस हद तक देखा है टीम की परफॉर्मेंस को अभी तक, क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस आपके जहन में हैं जिससे लगता है कि टीम अपने विनिंग वेज में आ जाएगी कुछ? मेरे ख्याल से जो मैंने नोट किया है कि हम फिनिश अच्छा नहीं कर रहे, और अच्छा स्टार्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद जो फिनिश टच होता है वो हम उस तरह फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, इवन बैटिंग और बॉलिंग बोथ में। लेकिन अब कोशिश यही है कि इनको जो प्लान दिया है उन पर दें, और जो चेंजेस किए हैं, मैं आया हूँ, फ़हीम अशरफ आया है, और बाकी जो आपके सामने पहले टीम खेल रही थी, तो प्लान यही है कि फ़िनिश जिसके हाथ में जो चीज़ आए वो फिनिश करें। कितने स्कोर तक लगता है कि रोका जा सकता है यहाँ पर? मेरे ख्याल से 150, क्योंकि आपको पता है कि पिंडी में हाई स्कोर होते हैं, लेकिन ट्राई होगी 150 160 पे इनको स्टिक करें। फाइनली चेंजेस टीम में क्या है? चेंजेस 3 चेंजेस हैं। मैं आया हूँ, फ़हीम अशरफ, और नहीं फिलहाल 2 ही मेरे ख्याल से, बाकी अभी मुझे उनका रिप्लेसमेंट जो पिछले मैच में खेले थे उसमें 3 चेंजेस हैं। चलिए, गुड लक। थैंक यू। So, here we are. So the news from the center is Northern have won the toss and they've decided to put runs on board. So thank you very much for joining us here. इमाद वसीम ने टॉस जीता है, नॉर्दर्न इज बैटिंग फर्स्ट। ज़्यादा दूर मत जाइएगा, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे लाइव एक्शन।
Saturday night, even KP is left. KP की team पहला मैच खेल Hello and welcome to the coverage of today's play. We are now here in Rawalpindi and it's match 15, Northern versus Central Punjab, and the news from the centre is that Northern have won the toss and they've decided they're going to bat first here, and no surprises as this ground is full of runs. You had a look at the wicket, you saw what happened when the pitch report was done. Runs are available. We'll give you stats on that as well, what the average scores are. Here are the two umpires who have been working hard throughout this tournament, and the Pakistan Cricket Board have given all the elite umpires and match referees a fair run in the 33 matches that are being played. So we're halfway through almost. We've got 4 sides who've played five matches each. We'll come back to that. This is these are 2 sides. I've got Wasim Akram alongside me, welcoming him also here at the National T20. Looking good and strong. Good afternoon, Assalamu alaikum everyone. Hope you're well, Sikandar. Yes, Northern, of course, top of the ladder, won every game so far in their tournament. There are a couple of changes for them. Zishan Malik playing his Suhail Akhtar, in fact, playing his first game. Imad Wasim, the skipper in this game, playing his first game. So it's a strong side. They picked up a very strong squad. And coming back to Central Punjab, Kamran Akmal, Babar Azam is back as a skipper. Saad Naseem was a captain before. Abdullah Shafiq so far has been the find of this national T20. Rizwan Hussain, good talent, but he has to get runs. Fahim Ashraf is back in the squad as well. Qasim Akram. So yes, it's a balanced side, but of course Northern definitely top of the ladder here in this tournament so far. Hoping for a change of fortune, Central Punjab. The toss didn't go their way, but Babar Azam was of the opinion that he's happy to bowl first, just to get an idea what the run chase is going to be like. Yesterday, when everything was being fixed around here, we were talking to our crew and they said that the dew was quite heavy later on in the evening. So the second match probably will have its effect on that. Central Punjab have had flashes of brilliance. They've looked good, but only in patches. There were games they probably could have won, but they couldn't finish them off well. And I believe their bowling struggled a bit as well, Central Punjab's. And that's where I think they need to improve in this tournament. But coming back to the leaders of this tournament, Zishan Malik. Best batsman for Northerns, Zishan Malik. He's in good nick. And with him, Suhail Akhtar at the other end, another experienced kind of player who captains Lahore Qalandar, is in PSL. I beg your pardon, it's Umar Amin is the other opener here. Yeah, Umar Amin was given the opportunity to open in place of Ali Imran. There were changes expected, of course, when Babar Azam comes in. Firstly, he has to make a place in the 11.
rightly said by you, Saad Naseem, their regular captain, is now part of the squad, but yes, he's given the reins to Babar. We're expecting a good second leg here of the National T20 as the umpire is pretty much happy with everything around him, and he says that let's play. So match 15 begins, Northern winning the toss, and they've decided to bat first. Good carry to start off with from Sohaib. He's from Sialkot. Got 3 wickets in his first game in this National T20. Slip in place for him. New ball is crucial for Central Punjab. They need to get wickets against this strong side. Bit of swing, good sign. Pitch looks really good. I thought the team who will win the toss, they probably will bat first, but again, that's, I think, applies like you were saying, Sikandar, early on, the second game when the dew will be a factor. And Northerns have won 4 games batting first. That shows that their strength is bowling. Of course, very experienced bowling attack. Amir, Sohail, Tanveer, Haris Rauf, and then Imad Wasim is back in the squad as well with Shadab Khan, Hamid Azam. So they have plenty of variety plus variation in their bowling. You're talking about the bowlers. From what we saw in Multan, the quicks really have been put under the pump. There was hardly any margin for error for them. They had to bowl into the stumps, otherwise they were going for runs all over the place. And that's probably what they've learned very quickly. Sides like KP who are bowling heavy, or sides like Northern who've got good bowling attack, they understood that the key for quicks will be just stay within the stumps. I mean, as a bowler on flat decks, you can just aim back of a length and try to aim the stumps every time. Down leg side, wide has been called, first runs. But I must say, a bit of carry there, a bit of seam as well. It looked little wet to me. I asked the groundsman, he said no, it's fine. But it looked little dark to me than usual, maybe a new pitch first day. But this has been the best pitch in PSL. Twice teams have chased 180 plus. Yeah, we were getting those stats early in the morning. 179 is the PSL average first inning score. Pindi is known to be one of the best batting wickets around. So that's darkness I was talking about. But it looks okay from this angle. The sun is shining, and there's a bit of grass on the pitch. That's good in a long run. If you're playing 3 to 4 games in about matter of couple of days, it means it'll bind the pitch together. So over and all, pitches has been excellent in this stadium. Well, played uppish, away from the body, and that's the first wicket. So pretty much a loose shot there from Umar Amin, and that's the end of his innings, and that's the start of Central Punjab's luck. Very soft dismissal, but good start by Central Punjab. Went straight to the fielder, an extra cover. Abdullah Shafiq, the fielder. So they got the first breakthrough, Central Punjab. They need a win here. Umar Amin departs without scoring any run. And it's 2 for 1. It's batsman number 3, Sohail Akhtar, who's been included in the side today. It's his first game in the National T20. I was very surprised the captain of a PSL franchise doesn't get a game. And he's a very good player. I've seen his innings in PSL for Lahore Qalandars.
I mean, he's kind of a match winner in this format. But that's his chance to shine, I suppose. Whenever you get chance, try to get runs, put pressure on the selectors. And that's why he's here. Little bit of extra bounce and a loose shot. Straight to the easy catch. Not a problem. Yeah, sort of a half shot, stop bat shot, a lot of bottom hand in that. He just went pushing at it. Had he just given the full flow, probably would have crossed that fielder. I think that's where a captain or a bowler should tell his skipper that I need an extra slip for 1 or 2 deliveries, because you need wickets in T20 format. Bit of swing, nipped back into the right-hander, an extra bounce because it got hit on the thigh pad. Sohaib has looked good. He rightly mentioned by you, got 3 wickets. He's very promising, the start in Multan. He uses the new ball well. Also been good in the second spell. But we've seen bowlers who've got variations, like you rightly said. This format requires that. If you got a slower one, if you can bowl the slow bouncer, you're good at it. End of the first, it's 2 for 1, 3 for 1. So for those who just joined us, Northern have won the toss here in match 15 against Central Punjab. They've lost their wicket of Omar Amin. That went to Sohaib, and here's Ehsan Adil from the commentary box end. Runs here with the bat, nicely just opening the face to third man. It's not a bad pitch for fast bowlers, especially in first 3 to 4 overs. So far we have seen we're into second over, bit of seam off the pitch as well, and bit of extra bounce. And that's where as a bowler you should be aiming the stumps and try to get wickets. Experienced campaigner Ehsan Adil. Good thing for Central Punjab now is that with the arrival of Babar Azam, now they don't completely depend on Kamran Akmal's good start. They've got Babar Azam alongside, so they can add those extra 30 runs. Nicely done, leaning into that. Got protection. It was so important if the national selectors and the captain can find a few good boys and then try them out in Zimbabwe, who are coming in at the end of the month. They probably will, and they should. I mean, I've seen a couple of youngsters who really performed well in this national T20. Namely, one is Abdullah Shafiq, who got 100 on his debut. You've been part of various franchises, now currently with Karachi Kings. It's really amazing how the PSL has helped Pakistan cricket to extract fast bowlers' battery. Musa, Naseem Shah, Shaheen Shah, and so on. You see, first 3 to 4 PSLs, we were looking for, say, emerging player. Mostly we found bowlers. But the last PSL, we found some batsmen as well. So that's really is a good sign for Pakistan cricket looking ahead. Another good delivery. They're not giving anything away so far. They're bowling well. Central Punjab bowlers.
Punjab is coached by Shahid Anwar, and of course Northerns are coached by Mohammad Wasim, last year's champions. Northerns are looking good this year as well, very consistent, and what a squad. A lot of options. You can rest a player, you can pick a player. As far as bowling concerned, I mean, look at this bowling attack, one of the most experienced bowling attack in this tournament, and I suppose in world cricket. Sohail Tanveer and Muhammad Amir, and then Haris Rauf, who's sharp, 150 plus sometimes, runs in, good yorkers, good variations, and a wicket-taking bowler. Yeah, we were just looking at the stats the other day for Sohail Tanveer. He almost has 347 T20s, so that's almost a year of T20 cricket. He's been there since the invention of this format, I think. Slightly uppish, and he's played so well from one league to another, and also for Pakistan. He exactly knows what's required of him in terms of length, pace. Makes it so difficult. End of the over, it's 8 for 1. Back once again into the third over. So there's no change, so Sohaib continues. Eight for 1 in 2. This is the third over. Northern won the toss and they elected to field bat. A couple of changes in this squad as well. So far, turn out to be the best team in this tournament. Again, long way to go. Ooh, that was very well done. He just took the pace off the ball and just got it at the perfect length. The batsman went through the drive a touch early. Good variation from Sohaibullah, a leg cutter. Sohail Akhtar missed it completely. His front foot was nowhere near the pitch of the ball. He was probably expecting a short delivery. Wet and punished. That's what we are talking about. It was there to be hit, and Sohail went with the full flow. First boundary for Northerns, 12 for 1. A cracking shot from Sohail Akhtar. It was short, it was wide, and again misfield. That's where I think Pakistan cricket needs to improve the fielding. Even at this level, this is the top level we have in this country. You got to be at the top of your game, and now it demands, especially this format, you will make it into the 11 if you're good in all three departments. If you lag, your excess baggage. The bowler is putting everything into it. You would expect the same from his fielder, especially in the circle. We've seen that at times, that the intensity just goes down by the time you're getting to the end of the innings. We start off very well as Pakistanis. Even when I played, it was exactly the same story. First 15 overs, we were spot on. The last 35 overs, we were just gone. This is the boundary. Okay, awkward bounce, I can understand. But that's where it's so important for youngster to make sure have body behind the ball. If it misses the hands, it can hit your leg or whatever. But that comes with practice. The wide ball.
I thought for a moment that was a good ball, but has it gone over the head? That just took off from a very good spot. Wow. That surprised the bowler. Wow, he's gone through the line. He just picked the length so early, and he's dispatched that for the first maximum of the day. Wow, what a shot on this pitch. No wonder he's averaging 48 in this national T20. Zishan Malik. It was a length ball, it was within the stumps, and here we go, bang. See you later. Discussion going on between Babar and the bowler. Now after changing of field, mid-off is up still, but so is mid-on. Square leg is back on the boundary, and fine leg is up in the circle. Another good variation from Sohaib Bulla. Good delivery, 20 for 1 in 3. So sort of a quiet start here, but we've seen this has been the trend in the power play. Sides have been going somewhere around 35, 40 runs. But the last over was big for them. They got a boundary and a maximum. Zafar Gohar has been brought in, so just slowing things down, rightly so. Babar Azam bringing in a spinner. So I've just seen the squad of Central Punjab, and I've just found out that Fahim Ashram is playing his first game. That's quite surprising. He has played for Pakistan. He's probably come back into Pakistan squad, and he hasn't got a game yet. That's his first game today. Left arm spinner Zafar Gohar. Yeah, the surprising part is that probably most of the games lost by Central Punjab is that they've been lacking a finisher. Someone who can get them 11, 12 runs in the last 5 overs. And you mentioned Pakistan cricket. These are the boys who've been trying to work hard on their batting. Imad Wasim, Fahim Ashraf, Hassan Ali, who's not a part of the tournament though. But yes, they're yet to find someone who's flexible enough to be played at 6, 7, 8 and just can come and start scoring. He can bowl well. This is quite nippy. One of the top bowlers in PSL as well, so that was a bit surprising for me. Inside out, another brilliant shot from Suhail Akhtar. Much needed boundary for Northerns. Yeah, the idea seemed right. He was following the batsman, but the pace was way too slow. He had good enough time to get into position. Nicely done. He's clearing that infield. Remember last year Ran had the opportunity to do commentary in the last few games of the National T20. Sweeps this one and should be 4 more. Nicely done, just eyeing the gap. That's a good shot. He knew where the fielders were. Square leg was up, so was short fine leg, and he hammered it. He's on 16 now. Suhail Akhtar, like I said, dangerous player.
So yeah, it was a full house in Faisalabad, and the atmosphere was PSL-like, and you got all the players playing who play for Pakistan. It was just amazing. Now the new normal, we've got to understand what's required, and one day we get back to having the crowds around here who've been itching to come in. Easy, well ball, Jab. Is Kamran Akmal loud, or is just me? The stump mics are a bit too loud in my ear. Boys. Yes, you will experience that, especially when KP plays. Rizwan is also quite vocal. Well done. That's well done. For a fast bowler, that's well done. End of the over, and it is 29 for 1. बहुत ही हैरानकुन सा फैसला किया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का आज इमाद वसीम ने। वो इंग्लैंड से आए हैं और उन्होंने आते ही सबको हैरान कर दिया। इसे पुल किया, गेंद सीधी हाथों में आई और सुहेल अख्तर भी हैरान हैं। 17 रन बनाने के बाद वो आउट हो गए। अच्छा कैच पकड़ लिया गया। सना, बिल्कुल आज जैसा पावर प्ले चाह रहे थे नॉर्दर्न, वैसा पावर प्ले नहीं मिला। बहुत अच्छी बॉलिंग सेंट्रल पंजाब की तरफ से, और अच्छी लेंथ को हिट किया और कोशिश की कि उसको बैकफुट पंच किया जाए, बट सीधा फील्डर के हाथ में और एक और विकेट गिर गई। तो पहली गेंद पर कामयाबी हासिल की फ़हीम ने इस सीज़न में 29 पर 2। इनकमिंग बैट्समैन रोहेल नज़ीर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और एक अच्छा मौका इस वक्त उनको मिला है। पिछले मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और देखते हैं कि अब इस मुश्किल सूरत हाल में से अपनी टीम को कैसे निकालते हैं। यहाँ रोहेल नज़ीर मैन ऑफ द मैच हुए थे जब इनको मुल्तान के मैच में प्रमोट किया गया था। आज फिर इन्हें बहुत ही सुनहरी मौका मैसर आया अपने होम ग्राउंड पर वन डाउन खेलने का। फ़हीम अशरफ ने एक फील्डर को स्लिप में खड़ा किया हुआ है। बाबर आजम को, दो जो आउटफील्डर हैं एक डीप स्क्वायर लेग पर हैं, गेंद को इन स्विंग करते हैं। ज़्यादातर फाइन लेग को आगे बुला लिया गया। थर्ड मैन के फील्डर डीप हैं और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से आगाज़ किया। दिलकश कवर ड्राइव। रोहेल नज़ीर, इससे जाहिर होता है कितनी अच्छी फॉर्म में है। बिल्कुल, थोड़ी सी बॉल उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप मिली, उसको खूबसूरत कवर ड्राइव मारी। फील्ड सारी इसी तरह की थी कि विकेट्स में बॉल होगा, बट दिस इज़ द बाउंड्री। यह बहुत अच्छा टाइम किया था। हालांकि इस पिच पर ज़्यादातर बैट्समैन को मुश्किल पेश आ रही है थ्रू द लाइन खेलने में। मॉइस्चर के सबब कई मरतबा गेंद रुक कर आती है और वही हुआ। गेंद इस बार सीम पर टिपा पड़ने के बाद कट हुई। इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे रोहेल नज़ीर। बिल्कुल, फ़हीम अशरफ को एक ड्रीम स्टार्ट मिला है। एक तो टीम ने बहुत अंडर प्रेशर रखा है नॉर्दर्न को, और विकेट देखें फ़हीम अशरफ की बॉल और सीधा फील्डर के हाथ में। कोशिश की थी बाउंड्री के लिए,
गैप में डालने के लिए एक ड्रीम स्टार्ट है आई थिंक फ़हीम अशरफ का ऑन द कम बैक। बहुत अच्छी कैप्टनसी भी बाबर आजम की। बैकफुट पर खेला और पॉइंट पर फील्डर पूरी तरह से तैयार थे और इस तरह से एक और विकेट मिल गई। रोहेल नज़ीर 4 रन बनाने के बाद आउट हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल। एक और विकेट मिली फ़हीम अशरफ को। ओवर का आगाज़ उन्होंने विकेट पर किया था और यह अंजाम भी बहुत अच्छा रहा। ज़फ़र गौहर का एक अच्छा कैच, अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त ओवर सेंट्रल पंजाब के लिए। थोड़ी सी पिच में एक रुक के बॉल आ रहा है पर बैट्समैन उसको जज नहीं कर पा रहे, सॉफ्ट हैंड से अभी तक नहीं देखा, सब पुश कर रहे हैं। सो 3 बॉलों पे 4 रन बना के रोहेल नज़ीर पेविलियन वापस। जी हाँ, 29 पर 3। शादाब खान अब ज्वाइन कर रहे हैं ज़ीशान मलिक को, जो शुरू से ही रुके हुए हैं। वो विकेट के आव भाव का अभी जायज़ा ले रहे हैं। और अभी हम यही आपसे जिक्र कर रहे थे कि स्ट्रोक प्ले के लिए ये इतनी आसान पिच नहीं है। अगर आपने शॉट खेलना है या तो ओवर द टॉप पूरे ज़ोर के साथ खेलिए या फिर गेंद को करीब में गिराइए, 1 रन लीजिए। लेकिन ये इन बिटवीन शॉट्स की कोई गुंजाइश नहीं है सना। बिल्कुल बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है इस वक्त सेंट्रल पंजाब इस विकेट को और बैटर्स अभी उसको समझ नहीं पा रहे, शायद बड़े स्कोर के लिए जाने में गलती ज़्यादा हो रही है। शादाब खान ज़्यादा वक्त नहीं लेते, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं। अच्छा पिकअप और थ्रो एहसान आदिल का। विकेटें हासिल करने के बाद जो पंजाब की फील्डिंग है उसमें भी दम नज़र आ रहा है। बिल्कुल, और बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप होगी। अभी तक पार्टनरशिप नहीं हो पाई सेंट्रल पंजाब नॉर्दर्न की टीम की, और इस वक्त शादाब और ज़ीशान दोनों इन फॉर्म बैटर्स हैं। इस मुश्किल से निकालने के लिए इन्हीं के ऊपर अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस पार्टनरशिप को लंबा लेके चलें और अच्छा टारगेट ऊपर लेके जाएं। 6-3 की फील्ड के साथ इस वक्त अटैक कर रहे हैं फ़हीम अशरफ पवेलियन एंड से। ऑफ स्टंप के बाहर चेज़ किया था इस बार ज़ीशान ने, और इसके साथ ही शानदार ओवर ख़त्म हुआ। 2 विकेटें ली फ़हीम ने यहाँ पर, 5 के बाद 30 पर 2। रावलपिंडी में नीम गर्म मौसम है और इस बार ज़ोरदार शॉट खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, आउटसाइड एज लगा, लेकिन क्योंकि बहुत ज़ोर से अपने बल्ले को स्विंग किया था शादाब ने, इसलिए किस्मत ने भी यावरी की और गेंद दूसरी स्लिप की खाली जगह से निकल गई। बिल्कुल, जैसे कहा जाता है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। एक ब्रेव शॉट थी, एक उनको लकी चांस मिला स्लिप खड़े होने के बावजूद, बॉल ने हाइट पकड़ी और 4 रन्स की तरफ। टॉस जीता आज इमाद वसीम ने और उन्होंने पहले बैटिंग करने का ऐलान किया। 4 तब्दीलियां की हैं नॉर्दर्न ने। एहसान आदिल अपनी हाइट का भी भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और कंडीशंस का भी भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करें, और ये सारे डॉट बॉल्स बड़े क्रूशल होंगे क्योंकि पावर प्ले में काफ़ी डॉट बॉल्स हो चुके हैं नॉर्दर्न की टीम की तरफ से, और अब इसको जो रीबिल्ड करना है इनिंग्स को, वो 18 डॉट बॉल्स अब तक हो चुके हैं और ये 6ठे ओवर का खेल जारी है। जी हाँ, तो हम जिक्र कर रहे थे कि आज मोहम्मद इस्माइल नहीं हैं, अली इमरान भी ये मैच नहीं खेल रहे, मोहम्मद नवाज़ और हैदर अली की तरह।
शादाब खान बिल्कुल परवाह नहीं करते, सूरत हाल आजकल कैसी भी हो, बोर्ड पर 3 विकेटें गिरी हुई हैं, लेकिन वो अपने स्ट्रोक खेलते जा रहे हैं जैसा कि उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच में किया था। बिल्कुल, और इस वक्त बाबर आजम बड़े मुश्किल में अफसोस कर रहे हैं क्योंकि इसी बॉल पे उन्होंने स्लिप हटाई थी और एज ए कैप्टन उनको बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि एक बड़ी क्रूशल विकेट चली गई है। एहसान आदिल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई और स्लिप में बॉल होता हुआ बाउंड्री लाइन के पास इंपॉर्टेंट रन्स हैं ऑफ कोर्स पावर प्ले के लिए। इससे दबाव कम होगा जो अब तक झेलना पड़ा है टॉप ऑर्डर में 3 खिलाड़ियों की नाकामी के बाद नॉर्दर्न को। क्रीज पर हमेशा बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहते हैं, बिजी क्रिकेटर हैं शादाब खान। बड़ी खुश उसलूबी से इन्होंने कप्तानी भी की थी मुल्तान की लेग में। और दो चौके 2 बाउंड्रीज लेने के बाद शादाब ने अभी अच्छा डिफेंड किया। उनको पता है इस वक्त टीम एक और विकेट लूज़ नहीं कर सकती, तो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान से भी खेलें पर स्कोर बोर्ड भी चलता रहे। और सना ऐसी पिचेस पर जहां पर कभी कभार नमी होती है T20 क्रिकेट में, तो आपका स्ट्रोक प्ले से पहले डिफेंस भी टेस्ट होता है। और शानदार क्रिकेट ऑफ द बैक फुट, इस बार क्रीज का बराबर इस्तेमाल किया और साथ साथ लेंथ का भी शादाब खान ने बहुत ही ज़बरदस्त वेट ट्रांसफ़र किया और गैप में देख के ऊपर से पॉइंट और पॉइंट कवर के बीच में से शॉट मारा और इम्पॉर्टेंट बाउंड्री। एहसान आदिल का ये ओवर थोड़ा सा मोमेंटम वापस शिफ्ट कर रहा है नॉर्दर्न की तरफ। बहुत अच्छा फॉलो थ्रू भी अगर आप देखें शॉट में शादाब का। इस पावर प्ले की आखिरी गेंद आ रही है एहसान आदिल के जरिए, ऑन साइड में खेला और ये सिंगल पिंच किया। इरफान न्याजी को चैलेंज किया था जो मिड विकेट पर हैं, लंबे हैं, कई बार उन्हें झुकने में मुश्किल होती है और बैकअप भी मौजूद नहीं था जिसकी वजह से एक और चौका। यहाँ तो 5 रन मजमूई तौर पर शादाब खान को मिलेंगे पावर प्ले मुकम्मल होने पर 51 पर 3। केबल छोटी लगवानी ये वाली माइक। पहले विकेटें गिरती रहीं, फ़हीम अशरफ के आने के बाद लगातार 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन अब शादाब खान जो इनके साथ ही खेलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उन्होंने इस मैच की रंगत थोड़ी सी तब्दील की है और पावर प्ले की खासी हद तक पहले 5 ओवर्स की उन्होंने तलाफ़ी कर दी आने के बाद। जीशान मलिक से वो आगे निकल गए, 18 रन पर हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बैटिंग शादाब खान इस वक्त कर रहे हैं। जो सारा प्रेशर था टीम के ऊपर से वो काफ़ी हद तक ऑफ हो गया है क्योंकि बाय द एंड ऑफ द पावर प्ले 51 रन्स बन चुके हैं, बोर्ड पे लग चुके हैं। सो अब ये अपना टाइम लेकर भी खेल सकते हैं यहाँ पर। और जीशान मलिक भी जैसे आपने देखा है सारा वक्त मुल्तान में फॉर्म में थे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होगी। जी हाँ, क्योंकि पावर प्ले ख़त्म हो गया है इसलिए पंजाब के कप्तान बाबर आजम ने 5 फील्डर्स को अब दायरे के बाहर भेज दिया है। लॉन्ग ऑन नज़र आ रही है, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग, डीप थर्ड मैन और डीप कवर पॉइंट। और एजिया कामरान अकमल ने कोई गलती नहीं की। जीशान ये शादाब की तरह ऑफ स्टंप के बाहर खेलना चाहते थे लेकिन इतना ज़ोर से बल्ला नहीं घुमाया, फाइन एज चला गया और कामरान अकमल ने एक अच्छा कैच ले लिया। अगर आप देखें तो लेंथ बहुत अच्छी थी, इवन दो विड्थ थी बॉल को शॉट मारने के लिए, बट बिकॉज ऑफ द लेंथ एंड द पिच, जिस तरह की पिच में थोड़ा सा बाउंस अनइवन है, उसकी वजह से फ़हीम अशरफ ने बड़ी अच्छी लेंथ को हिट किया और एक और कामयाबी सदर्न पंजाब के लिए। 9 रन बनाए मलिक ने, 52 पर 4।
आसिफ अली नए आने वाले बैट्समैन जो इन दिनों अपनी खोई हुई फॉर्म बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में जमैका की जानिब से खेलकर आए हैं वेस्ट इंडीज़ में CPL। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ इनका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा है। फैसलाबाद की इनिंग्स याद है आपको सना? बिल्कुल 90 रन की वो भरपूर इनिंग्स जो कि इसी टीम के अगेंस्ट थी, बहुत ज़रूरी। और ये कैच देखें, अच्छा कैच भी और बहुत अच्छी बॉलिंग फ़हीम अशरफ की। 6 रन दे के 3 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं और अभी तक सिर्फ 1.2 ओवर्स हुए हैं उनकी तरफ से। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेल ये कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ज़्यादातर इन स्विंग बॉलिंग करते हैं फ़हीम अशरफ। आज हमने देखा है इनकी गेंदें कई पड़कर सीधी भी रही हैं। उसी तरह की गेंद पर इन्होंने ज़ीशान मलिक को चलता किया। जब इस तरह की पिच आएगी जहां पर सीमर के लिए मदद हो तो फिर इनको खेलना इतना आसान नहीं होता। ये अच्छा सीम को हिट करना जानते हैं। इंग्लैंड के दौरे में ये ज़ख्मी हो गए थे, कंधे के मसाइल के सबब अभी मुल्तान की लेग में नज़र नहीं आए। अच्छी बात है कि इंजरी के बाद एक रिदम में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई लूजनेस नहीं थे आज जब आए हैं बॉलिंग पे, पहले ओवर से ही ऑन टारगेट। ये एक प्रोफेशनल प्लेयर की निशानी है कि चाहे आपको ब्रेक मिल भी जाए, आप इंजरी से भी वापस आ रहे हैं, पर आप पहली बॉल से यू आर ऑन द मनी ताकि टीम को फ़ायदा पहुंच सके। सो बहुत अच्छी इस वक्त अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं फ़हीम अशरफ। जी हाँ, वार्म अप बॉलिंग की कोई गुंजाइश होती नहीं है आजकल के क्रिकेट में। पॉइंट पर जफर गौहर हैं, बहुत ही अच्छे फील्डर्स में इनका शुमार किया जाता है। इस बार एक ही रन तक उन्होंने महदूद रखा। बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं जफ़र गौहर। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं और हमने काफ़ी मैचेस एक दूसरे के अगेंस्ट लाहौर में प्रैक्टिस खेले भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त टेम्परामेंट है, एग्रेसिव प्लेयर हैं बहुत। जी हाँ, एंटरटेन भी करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खेमे में सईद अजमल, जफर गौहर ये खुश रखते हैं सबको। अच्छी जुगत करना भी जानते हैं। बिल्कुल, हमने इनके साथ कुछ मैचेस खेले हैं, कुछ स्लेजिंग भी जानते हैं और एग्रेसिव प्लेयर हैं। जफर गौहर के सामने शादाब खान रन नहीं ले सकते। 7वां ओवर मुकम्मल हुआ, 53 पर 4। अच्छा आगाज़ किया सेंट्रल पंजाब ने। उनको 2 पॉइंट्स हासिल करने की अशद ज़रूरत है। उस्मान कादिर अब आएंगे लेग स्पिन बॉलिंग करने के लिए। नया आज मीडिया सेंटर एंड है, यहाँ से बॉलिंग करेंगे। अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है। मुल्तान में आसान नहीं था स्पिनर्स के लिए। और ये पिच जो है इसमें बाउंस ज़रूर मिलता है लेकिन स्पिन कम हो गया। घास नहीं है सना, लेकिन फिर भी स्पिनर्स के लिए कम मौके रहते हैं यहाँ। बिल्कुल, T20 में आप एज ए स्पिनर आपको और बहुत सोच समझ की बॉलिंग करनी है। पेस वेरिएशन, स्पिन के अलावा पेस वेरिएशन भी बहुत ज़रूरी है और बड़ी अच्छी फील्ड सेटिंग। अभी भी एक स्लिप से जा रहे हैं बाबर आजम। कप्तानी में सेंट्रल पंजाब की बॉडी लैंग्वेज में हमने देखा कि बाबर आजम के आने के बाद एक जैसे तने मुर्दा में जान पड़ जाती है, वही लग रहा है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है इस टूर्नामेंट के लिए भी, इस टीम के लिए भी कि सेंट्रल पंजाब यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस दे और टूर्नामेंट में वापस आए। शानदार पुल शॉट, मिड विकेट पर फील्डर थे, स्क्वायर लेग पर थे, लेकिन दोनों में शिगाफ डाल दिया आसिफ अली ने।
ज़बरदस्त शॉट, लूज़ बॉल था, बहुत पीछे गिरा हुआ बॉल था, और इस पिच पे जहाँ बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा है, इस तरह की लेंथ हिट करेंगे तो इसी तरह का ट्रीटमेंट मैसर होगा। ये उस्मान कादिर के बारे में हमने मुल्तान में भी देखा था कि कई बार पहले ओवर में ये वार्म अप किए बगैर ही बॉलिंग शुरू कर देते हैं, और एक दो ये गिराते हैं गेंदें शॉट। ये बेहतर लेंथ थी, इस बार रन नहीं मिलेगा। यही फ़र्क होता है एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर और अगर आप अपने आप को एक एवरेज लेवल पर ले जाएं, कि जो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो बॉलर्स बनते हैं वो फिर 6 के 6 बॉल्स अच्छी जगह पर कराते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परामेंट डेवलप करना एज ए बॉलर। इस बार दूसरा रन की कॉल है आसिफ अली की जानिब से। शादाब खान बहुत तेज दौड़ते हैं, फील्डर को दबाव में लिया साद नसीम को और 1 को 2 में बदल दिया। खूबसूरत क्रिकेट। अभी इस वक्त ये पिच काफ़ी टाइम दे रही है और पूरा अपनी मर्जी से गैप में बॉल शॉट खेला ताकि 2 रन हासिल किए जा सके। बंद दरवाज़ों के पीछे इस टूर्नामेंट का ये दूसरा मरहला भी होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पर तमाशाइयों को आने की इजाज़त नहीं है। ये टीम संभलने की कोशिश कर रही है, एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। नॉर्दर्न को 8वां ओवर यहाँ पर ख़त्म हुआ 62 पर 4। Northern is in a little bit of a bother. 62 for 4 after 8. Zafar Gore onto the attack. Inside out and a wonderful stroke over cover. Nicely played by Asif Ali. Yes, good afternoon, Azhar. Asif Ali completely counter-attacking, taking Zafar Gore on. Start of this over for a beautiful shot over extra cover. Just see how he just made a little bit room and just went over the cover top. This is the first time we're seeing Northern under pressure and then middle order being put towards the test, Azhar. Shadab is very quick and he got to 2 very comfortably. That's the strength of Northern as well, batting lineup, especially the young players like Shadab. They can run quick between the wickets. Yes, they bat very deep. They shuffle their batting order again, and this time was a lazy start, but they're recovering well. Yeah, we've seen some seam and the ball stopping into the pitch. We've seen from the first ball. You can see the bounce from Zafar Gore as well. So there was some support for the bowling in this game so far. Yes, it's a fresh pitch. Now I feel like Northern started off thinking exactly that this is Multan Cricket Stadium. You know, as they're like it's a change. They got a rest in the middle, 2 days rest, new fresh pitch. And the ball, as you see, is kind of stopping, getting stuck in the pitch, helping these bowlers out. You see a couple of edges were hit for 4s. Hassan Ali has been seaming the ball around, also Fahim Ashraf. You can see that's the fresh look of the pitch. You can see Shazir, and don't you think it would have been a good idea to just bowl on this pitch, because Pindi is a very good chasing ground. We've seen 180 plus chased in PSL as well.
we'll talk about that in the next over. And end of the 9th over, Northern 71 for 4. Yes, Shazia. What do you think after the toss on this pitch? What would you have done? It's a gigantic 6 by Asif Ali. What a hot shot by Asif Ali straight off the bat. Asif Ali's just dealing first ball boundaries. Last over 2, just counter-attacking, getting the run rate going ahead for Northern. What a beautiful shot. Just cleared the air in his slot for a big maximum into the stands. That was a beautiful shot. Just picked up time with power. Azhar, on this pitch, 9.5 runs per over has been going the rate since PSL. And as you see, Northerners keep shuffling the batting order. They are completely checking their bench strength. Today, they're giving the first game to Sohail Akhtar, and also they tried Umar Amin up top. Now, it was a little lazy start, but I do feel Northern, with their bowling attack, with their disciplined bowling attack, they can defend any total. It was such a big 6. They'll get some time to get the ball back. Yes, Northern is a very strong side. Their bowling attack is very strong. They can defend almost any total, but Babar, with the inclusion of Babar, I think CP must be feeling more stronger. Of course, an ultra boost coming from Babar being in the team, also Fahim Ashraf. Very well bowled. It's a good ball after getting hit for 6. Yeah, and also you have to look condition in Pindi. Usually there'll be support for the seamers in first 4-5 overs. I think Northern should have used it. But the thing is, they are such a good team. They can actually prove their decision right, and which is the quality of any side. Doesn't matter what you do. Even you can lose the toss and have to bat first. So you have to back them. Nearly, Asif Ali nearly found the fielder at deep mid wicket. We have to see, has he got 6 or 4? Usman Khader still trying to get his line right. Just pitched it short. Asif Ali saw where deep mid-wicket, deep square leg was, and just placed it in the middle. The umpires are just checking what it was, a 6 or a 4. Almost a catch at the same time, Azhar. It looks like a 4. It looks like 4 runs. It was a good try by the fielder. Last chance, he really tried to just fully extend. But Usman Khader has to get his line right. As you see, Northern has lost 4 wickets. But as you see this angle, it was a full desperate dive. Did it touch his hands, Azhar? Asif Ali would have been very unhappy because if you get out, it was a 4. So if you get out on a ball like this, which you should have hit outside the boundary, but he nearly found the fielder. Was lucky enough to get 4. They're running the first run hard, but nicely collected. But as you see, Azhar, there's still 81 runs on the board. 10th over coming in, but 4 wickets down. But Northern has still picked up that run rate. They're still moving. They're on the go. They're not getting under pressure. They're playing with full confidence and fearless cricket. Dot ball to finish the over. 82 for Northern.
Interesting bowling change by Babar Azam. Saad Naseem hasn't bowled much in this tournament yet, but he's opted to go for him. It was a shortish ball outside off stump, and Asif Ali smashed it through point. Just man on a mission, Asif Ali, just wide and short, as you see, just dissecting the two fielders from between. For again, as you notice the trend by Asif Ali, the last 3 overs, a boundary first, second ball of the over, putting automatic pressure towards the bowler. Yeah, with the leg spinners, it's very tough, especially in first 2-3 balls, to land the ball in the right area. And with Saad Naseem hasn't bowled much in this tournament, it will be tough for him with Asif Ali and Shadab developing a very good partnership. Big hit by Shadab. They started off really well. They picked up wickets. Fahim Ashraf getting 3 wickets, and then you know, in power play they got 4 wickets. So they have started really well, and obviously they will get some 4 or 5 overs which they need to fill up. But they must capitalize on this now, because they haven't won many games before. It's the end of the 11th over, 89 for 4. Zafar Gore coming back from commentary box, and just 1 over break for him. It's very important for Central Punjab to keep picking up wickets. Otherwise, these northern batsmen, they have such a strong batting lineup. They will keep playing the fearless cricket. It's a wonderful shot over mid-off. Again, very full. And a fantastic 6 over mid-off by Asif Ali. It's another 10 trees planted by Tuck and PCB. Asif Ali looks like he's been practicing in Rawalpindi Stadium for a few days now. Just freeing his arms first ball, feeling so relaxed and confident at the crease. Just see, he got the room, it was in his slot. All he had to do was just loft it as far as he wanted with his brand new bat. The line needs to be straighter, Shazar. If you let him free his arm, that's his area. That's much better. That's much better. Well, they know each other really well, playing for the same PSL team, Islamabad United. Yeah, you can see when the ball is pitched in the line of the stumps, it's harder to hit, and there is more chance. Match, Central Punjab's. Yeah, that is a very important thing for any side fielding. Very good touch by Asif Ali. Singles are very important. They are good boundary hitting side, but you can see the method behind it as well. So Asif Ali likes to.
100 रन मुकम्मल हो गए हैं नॉर्दर्न के। 4 विकेटें गंवाने के बाद 3 स्पिनर्स को आजमाया है अब तक बाबर आजम ने, लेकिन पिच की रंगत को देखते हुए जो उम्मीद थी कि शायद गेंद ग्रिप होगी, इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली। और बहुत पहले की बात है, 1984 में यहाँ पर लाहौर का एक नौजवान आया था न्यूजीलैंड के खिलाफ पैटर्न 11 की नुमाइंदगी करने के लिए, और पहले ही दिन उन्होंने तहलका मचा दिया था। 7 विकेटें ले ली थी और शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गए। ग्रेट वसीम अकरम हमारे साथ हैं इस वक्त भी। बहुत शुक्रिया तारिक, यस दैट वाज लॉन्ग टाइम, वो बड़ी पुरानी बात है, भूल जाता हूँ उर्दू में कमेंट्री है। अच्छा खेले, स्पिन के साथ इनसाइड आउट 2 रन बनाएंगे। अच्छी रिकवरी की है नॉर्दर्न्स ने, दोनों बैट्समैन बड़े एक्सपीरियंस हैं, डेंजरस हैं। एक 25 पे खेल रहा शादाब और 43 पे आसिफ अली, और इसके साथ 50 की पार्टनरशिप भी होगी दोनों में। 103 पे 4। बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं दोनों ही, आसिफ और शादाब। इससे गेंद को प्लेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बाबर आजम के आने के बाद एक नई उमंग हम देख रहे हैं इस वक्त सेंट्रल पंजाब की टीम में। बड़ा फ़र्क आता है अच्छे कप्तान के आने से। बिल्कुल, पाकिस्तान के कप्तान हैं, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं इस फॉर्मेट में, और पार्ट टाइम बॉलिंग से बॉलिंग हो रही है। वो अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं साद नसीम, और फ़हीम अशरफ के आने से भी फ़र्क पड़ा। 13 रन दे चुके हैं, ओवर ख़त्म, 13 ओवर ख़त्म, 105 पर 4। मिडल ऑर्डर की आज आजमाइश हो रही है नॉर्दर्न के। हमने देखा था मुल्तान में भी सिर्फ 155 रन बना सकी थी नॉर्दर्न सेंट्रल पंजाब के खिलाफ, और इस शॉर्ट गेंद को पहुंचा दिया बाहर मिड विकेट के। जोरदार छक्का लगाया आसिफ अली ने और अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। बिल्कुल, बहुत डेंजरस प्लेयर हैं और अंडर प्रेशर बैटिंग करने आए थे। 54 पे 4 आउट थे नॉर्दर्न्स के, और देखें ये पार्टनरशिप अब 50 से ज़्यादा की दोनों की, और 50 आसिफ अली के, और ज़बरदस्त शॉट मारे इन्होंने, थोड़ी शॉर्ट डिलीवरी, और हमने देखा अभी तक कोई टर्न नहीं हुआ इस पिच पे। अच्छी बैटिंग विकेट लग रही है। अर्ली ऑन नए बॉल से थोड़ा सीम ज़रूर हुआ, मगर उसके बाद ये पार्टनरशिप ने पूरी गेम की काई पलट दी है। और शादाब और आसिफ मिलकर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वसीम अकरम को बहुत खुशी हो रही होगी, दोनों कोचिंग कर चुके हैं दोनों की यूनाइटेड। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान से एक तो रेगुलर प्लेयर है पाकिस्तान के, शादाब, और आसिफ अली कोशिश कर रहे हैं कम बैक किया जाए। मेरे फेवरेट प्लेयर हैं इस फॉर्मेट में, स्पेशली नंबर 5-6 पे जो आपको एक फिनिशर चाहिए होता है। ये बिल्कुल उस तरह की बैटिंग करते हैं। ये देखिए, ये 50 जो कि उन्होंने शॉर्ट डिलीवरी थी, इजी पिकिंग्स, बड़ी आसानी से लेंथ पिक की और मिड विकेट की तरफ खेल दिया। इस बार स्लीपर करने की कोशिश की, पुल करना चाहते थे लेकिन एक ही रन बन सका। हाल ही में इनका जो फ्लिपर है पहले से बेहतर हुआ है, सही जगह पर गिराते हैं। इमरान ताहिर के साथ भी काम किया है गर्मियों में। बिल्कुल, बिग बैश भी खेले हैं, अच्छी वेरिएशन है इनकी बॉलिंग में, गुगली भी करते हैं, स्पिनर भी लेग ब्रेक भी करते हैं, फ्लिपर जैसा कि आपने कहा, वेरिएशन है नो डाउट। सही तरह प्लेस नहीं कर सके और उस पर खुद से नाराज़ भी हुए शादाब खान। ये भी बहुत ही जल्दी इनको शोहरत मिली थी शादाब खान को पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे सीज़न से। बिल्कुल, और उन्होंने बताया कि वो इस वक्त पाकिस्तान T20 फॉर्मेट के मेन प्लेयर हैं, ज़बरदस्त फील्डर हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनदर एक बड़ी अच्छी शॉट खेली, इनसाइड आउट, फील्डर है और 2 रन बनाएंगे। इसके साथ ही 14 ओवर खत्म, 115 पर 4।
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर नेशनल T20 कप का दूसरा मरहला आज शुरू हुआ। मॉडर्न क्रिकेटर्स आप देख सकते हैं ज़्यादा स्टाइलिश हैं आजकल। बिल्कुल ठीक है आपने तारिक, ये देखें बाल बनवाते हुए, जेल लगवाते हुए उमर गुल नज़र आए, मुझे इमामुल हक नज़र आए, मोहम्मद आमिर नज़र आए, और आजकल इन सब की छोटी छोटी दाढ़ी कहते हैं वो भी हैं, उसको भी ट्रिम कराना पड़ता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, आई सपोज गेम मीन्स पार्ट ऑफ देयर। टोनियन गाय के कस्टमर हैं। तारिक हमारे दौर में तो नहीं होते थे भाई। और एक और शॉट एक और जबरदस्त बाउंड्री, उम्दा फॉर्म में है शादाब की बाउंड्री, 33 पर चले गए। यहाँ बहुत ज़्यादा वाइड गेंद थी और शॉर्ट गेंद थी, तरने वाला साबित हुई शादाब खान के लिए। इसे स्क्वायर कट किया, कोई मौका नहीं था पॉइंट के फील्डर के लिए। और जब भी पॉइंट के फील्डर के बाएं तरफ से गेंद जाएगी तो बाउंड्री मिलना यकीनी हो जाता है कट पे। और बिल्कुल शॉर्ट गेंद थी, वाइड गेंद थी, देखिए कितना उन्होंने वेट किया और फिर शॉट बना के मारी। फील्डर पता था कि जो एक्स्ट्रा कवर में खड़ा है वो थोड़ा बाहर की तरफ है, तो अंदर शॉट मारी। सो बॉलिंग विकेटों में नहीं हो रही, थोड़ा बैकफुट पे आ गई है सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग। तो यहाँ पर 157 है पहली इनिंग्स का जो T20 का औसत स्कोर है पिंडी की पिच पर। ये तो उससे कहीं बेहतर पिच लगती है वसीम। पिच तो ज़बरदस्त है, आप देखें 120 पे 4 हैं, हम 15वें ओवर में हैं, तो आखिरी 5 में गई दोनों रहे, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अगेंस्ट द स्पिन खेला, वहाँ पे फील्डर है मगर मेरा नहीं ख्याल वो इसको कैच पर आएगा। और एक और छक्का आसिफ का। यहाँ ये फेवरेट जोन है आसिफ स्पिनर्स को, इसी तरह बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और बहुत अच्छा रिकॉर्ड है सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। जब ये आखिरी बार खेले थे फैसलाबाद में तो इन्होंने 10 छक्के लगाए थे अपनी 90 रन की इनिंग्स में। बहुत स्ट्रांग है, इनकी रिस्ट बड़ी स्ट्रांग है। मैं इनके साथ काम भी किया हुआ 2 साल इस्लामाबाद यूनाइटेड में, खड़े खड़े ये मारते हैं। और एक और जोरदार उठा हुआ शॉट, इस बार भी फील्डर सिर्फ देख सकते हैं। सनसनीखेज बैटिंग आसिफ की और सेंट्रल पंजाब के स्पिनर्स को उन्होंने बैकफुट पर कर दिया। बिल्कुल अंडर प्रेशर कर दिया सेंट्रल पंजाब को। ये इनका 209वां छिक्का था T20 फॉर्मेट में। ये देखिए अगेंस्ट द स्पिन, मगर तेज थी बॉल, ऑब्वियसली टर्न नहीं होगी, उनको ये पता था, इसीलिए ये शॉट उन्होंने मारी और मिडल की। और इनकी खूबी है कि ये खड़े होकर ही छक्का लगा सकते हैं वसीम अकरम की तरह अपनी क्रीज पर स्पिनर को। तारिक हमारी तो एक ही शॉट थी, लात टांग रख के मार दो भाई, जहाँ समझना है। लेकिन वसीम कभी कभार ये जहन में आता है शायद पहले खेल गए T20 के दौर से। नॉट रियली, अब मैं मूव हो चुका हूँ, मगर यस अगर ये फॉर्मेट मज़ेदार है यार, 4 ओवर करने हैं, लाइसेंस टू किल है, बैटिंग करने आओ, 3 पे आओ, 4 पे आओ, 5 पे आओ, 6 पे आओ, लिटरली आंखें बंद करके मारी जाओ शॉटें बना के। सो इट्स इंटरेस्टिंग एंड वेरी फन फॉर्मेट, नो डाउट। मैं 3 मैच खेला हूँ हैम्पशायर से 2003 में। पहला छक्का भी कहा जाता है वसीम अकरम ने ही लगाया था T20 क्रिकेट की हिस्ट्री का। Probably, I'm not sure. मजहर अरशद ने इसकी तस्दीक की है। अच्छा, वेरी गुड यार मजहर। ये मैं हैम्पशायर से ओवर खत्म हुआ, बाद में डिस्कस करेंगे। 15 ओवर गए, 133 पर 4। चलो चलो बॉय चलो। चलो बॉय चलो। Come on lads, come on. ये देखिए इनिंग्स अब सर उठाने लगी है क्योंकि दोनों सेट बैट्समैन हैं और ये पार्टनरशिप बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। आखिरी 5 ओवर्स में दोनों सेट बैट्समैनों से पाला पड़ेगा सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स का। अब इनके कंट्रोल में गेम आ चुकी है नॉर्दर्न्स के। ये पार्टनरशिप बढ़ रही है, दोनों सेट बैट्समैन है और डेंजरस बैट्समैन है। आसिफ तो ज़बरदस्त बैटिंग कर रही है, 5 छक्के इस इनिंग में ऑलरेडी मार चुके हैं वो।
मैं तारिक से पूछ रहा हूँ उर्दू में 67 को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा 67 कहते हैं। इस बार गेंद को खेला बिल्कुल स्लाइस करने के अंदाज से शादाब खान ने। जो ऑफ साइड स्वीपर थे वो स्क्वायर के बहुत सामने थे। अब देखें कि ये वो बॉलिंग जो है विकेटों में नहीं हो रही। वो विकेटों में करते हैं तो वो मिड विकेट की तरफ मार देते हैं। ये ऑफ स्टंप के बाहर की, और फील्डर जो एक्स्ट्रा कवर का था वो काफ़ी वाइड था, इसलिए उसने इन फॉर्म बैट्समैन है, ज़बरदस्त इनिंग खेल रहे हैं, 71 पे जा चुके हैं और 100 का पूरा चांस है। अभी हम 16वें ओवर में हैं। वसीम, कहा जाता है कि बॉलर्स को खासतौर पर स्पिनर्स को आंका जाता है टेस्ट क्रिकेट में। हम देखते हैं सेशन से, वनडे क्रिकेट में, ओवर से, T20 क्रिकेट में तो 12 ही गेंदें मिलती हैं, ज़्यादातर 12 गेंदों का स्पेल होता है। आई थिंक जो मैंने ओवर द ईयर्स देखा है इस फॉर्मेट में, आप एक स्पिनर को 3 से 4 ओवर इकट्ठे नहीं करा सकते। ये देखिए, ये हवा में है, एज लगी। जी हाँ, कामरान अकमल नीचे मुंतजिर हैं। बहुत ऊपर चली गई थी गेंद और कामरान अकमल ने कोई गलती नहीं की। आखिर में गेंद ने वॉबल भी किया तो विकेट हासिल हो गई अपने स्पेल के आखिर में उस्मान कादिर को। और इस तरह इस पार्टनरशिप का भी खात्मा हुआ। छक्का लगाने की ये नाकाम कोशिश थी। बिल्कुल अगेंस्ट द स्पिन खेले, एज लगी और अच्छा कैच आखिर में कामरान अकमल का। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स आसिफ अली की। 171 का इनका स्ट्राइक रेट और 67 रन इन्होंने बनाए और टोटल 139.45। बहुत ज़्यादा डेप्थ है नॉर्दर्न की बैटिंग में। 7वें नंबर पर हम्माद आजम आए जो पाकिस्तान के लिए टॉप 6 में खेल चुके हैं T20 क्रिकेट। और फिर अब इनका कप्तान इमाद वसीम भी ऑलराउंडर है, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं इस फॉर्मेट में। सो या मैंने पहले भी कहा था कमेंट्री में कि इनका स्क्वाड बड़ा ज़बरदस्त पिक किया है इन्होंने। क्रेडिट ऑब्वियसली जाएगा इनके कोच को, मोहम्मद वसीम। इनसाइड आउट, इनसाइड एज और सीधी विकेटों पे, 2 गेंदों पे 2 विकेटें। गेंद लेग स्पिन होकर और दूर जा रही थी और ये बॉडी से अवे खेलने का ही नतीजा था। शादाब खान आउट हुए, जगह बाद दिख रही 2 विकेटें गिर गई। दोनों सेट बैट्समैन, सो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा अब सेंट्रल पंजाब को। शादाब खान 39 पे आउट और 139 पर 6 विकेटें। बैटिंग जो है वो ज़्यादातर ख़त्म नहीं होती नॉर्दर्न की। इमाद वसीम जो हैं वो खेलने के लिए नंबर 8 पर आए हैं, लेकिन दूसरी जानिब उस्मान कादिर हैट्रिक पर हैं। एक स्लिप तो बनती है, मिड विकेट का फील्ड है ना, बाबर खड़ा है वहाँ, ये एक गेंद के लिए वहाँ ले सकता है और एक गेंद रहती है मेरे ख्याल में इस ओवर की। बट इट ऑल डिपेंड्स कि बॉलर क्या चाहता है। गुड लेंथ गेंद आई और इसे विद द स्पिन खेल दिया आखिर में इमाद ने। 16 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 139 पर 6।
139 for 6. And after a bit of a hiccup of a start, got that partnership going between Shadab and Asif. And then both of them being dismissed one after another has brought things back in Central Punjab's favour to a certain extent. We know this is a high-scoring ground, so Central Punjab would feel that they're back to a certain level into this game. Azhar Ali joins us, and you'd be happy in how Central Punjab is looking to score points out here in the tournament. Yeah, they need points and they needed wickets, and that's what Usman Qadir provided Central Punjab with. A couple of big blows for Northern, so they'll be happy. They're back in the game, so they must finish well. In last 4 overs, they need to keep Northern in check. Good to see Fahim Ashraf in operation. After that niggle, he's playing his first game in the tournament. Fantastic start from him, coming back from injury, playing his first game, already got 3 wickets just for 8 runs of 2.2 overs. Great economy rate. You need wickets in the T20, and he's provided his team 3 wickets. Good to have Imad Wasim, their regular captain, in action. So is Babar Azam leading Central Punjab. Both of them have joined their squads today. That's a good ball. Saw him charging, dropped it slightly short. Good carry as well. Yeah, there is some pace in the pitch, and we've seen the bowlers who hit the seam on this pitch got some lateral movement, so which is a good sign for Northern as well. They have some quality seam bowling attack as well, but this pitch might just get settled down a bit in the second innings. But who knows? I mean, you can't really judge the pitch until the both sides have. Top edge, it will go down to fine legs taken. Again, that extra bit of bounce squared him up. See the high catches, and I think it was Niazi who took the catch. So it is 140 for 7 after 16.3. Seven down now, but Northern is pretty loaded up in terms of people who can bat a bit and bowl as well. So Sohail Tanveer is a perfect example of that. First class level, he's batted 3, he's got 100. And here's Fahim Ashraf. He's dropping a shot, he's trying to close the blade and suddenly gets that top edge. Again, the fact that you mentioned that a bit of an extra bounce has just taken him by surprise. Thick edge just goes to one bounce down third man. You can see Fahim Ashraf is getting some movement off the seam. That ball looked like outside leg, but it just nipped back towards Imad a bit and he got cramped. You could see that last ball as well was wide, but it wasn't like didn't come on that well. So Fahim using that to his advantage. He still have lots of balls to get his fifer. Sohail Tanveer will keep strike and get off the mark as well. It's 142 for 7.
Azhar, you're part of Central Punjab. It's a completely different unit in a 4-day match. You guys are like right on top over there. Even last year final was just won comprehensively, one-sided. Yes, obviously a different format, and we got some experienced players in that, especially specialized in the red ball cricket, and it's going to go strength to strength now because of our batting, especially. I think there was Kamran Akmal, Umar Akmal, Babar Azam, yourself. You batted down to what, 7 and 8? Just that's Islamabad for you. Capital city of Pakistan, white roads, lots of greenery, and chilly nights. Good weather here compared to Multan, is known to be one of the hottest cities. When we're down for the toss, it wasn't that hot. It's good weather to play cricket. Both the seamers are on now for Central Punjab, and we've seen they bowled really well, especially Fahim and Hassan. Bit on the expensive side, but he still needs to work to do for his team. If they can finish well, with Babar Azam coming into the side, they'll feel more comfortable chasing around 170. You know, at this level, it might sound like a silly question, but I still wonder sometimes, with so much cricket happening around the world, the players who are playing the T20, the national T20, you completely have to switch your mindset and the mode and gear and get into a 4-day game. How long does it take to actually get used to the fact that, okay, I've got to stay here, I've got all the time? Yeah, if you can have a practice game in between a series or a season, where you can at least try your patience. It was mistimed, but got the desired result. Yeah, the ball wasn't bad. I mean, you can't blame the bowler for it. Hassan Adil did well to follow the batsman on that occasion, Ahmad Adam. He gets that inside nick and gets good bat onto it. Just races past short fine leg for a boundary. These runs are important for Northern. We've been told that this wicket out here during PSL first inning score is 170 plus. That's a slower one, but it hasn't got hold of it. This should be a wicket. Yes, it is. It's been taken down a deep mid wicket. No distance on it, and Hassan Adil's variation works. Ahmad Azam looking to go over mid wicket, and the ball hit high on the bat, and Saad Naseem takes an easy catch. It's still, the wicket is still helping the seamers. It's not quite a flat one yet, and Ahmad Azam goes for just 7, and Northern on 149 for 8 now after 17. One more ball to go in the over. Got the new batsman, Haris Rauf, out. I think it's the first time we're seeing Haris Rauf with the bat in this tournament. I don't remember seeing him come out bat. Well, I don't remember seeing him bat in a game, especially in Northern side. Probably he is such a strong side, they never got a chance.
There you go. Statman just tells us he'll come back to. Fahim Ashraf back in operation from the far end. Haris Rauf on strike. You're talking about Haris Rauf, a statistician tells us he's out of 43 matches. He's batted only 6 times. He has a total of 13 runs. Yeah, he hasn't got much match practice for sure. But yeah, Sikandar, you've seen still there's you've seen last ball of the last over and this over as well. From the length, ball is still nipping around, and especially the new guys coming in. It's not that easy, and especially for the tail as well. It's imperative how in this format you need to be good in all 3 departments. I remember, I don't know if it was Bob Woolmer's era or early days of Mickey Arthur. I was watching the team practice in the nets, and the first batsmen to actually go into the nets were Omar Gul and Saeed Ajmal. I don't know how it operates now. So they get to bat first and get done with their session, and then the actual batsmen come in. Yeah, we sometimes neglect that, and the contribution from the tail is such an important thing. You never know which game when you need 10, 15, 20 runs from them. But that worked well, actually. I still remember a game in one of the World Cups, I think, was it? In Sri Lanka against South Africa. Omar Gul just took the game away from the opposition. Scored 37, I think. I'm not sure. But yeah, it was in no time. And he hit everyone in the mid-wicket area. Yeah, I remember that game, and I think everyone thought Pakistan is done. They lost the game, but I think Umar Gul and Umar Akmal, they both played really nicely, and especially the way Umar Gul batted. And a miss there. Yeah, they were 79 for 7 or something, and then the target was 155. I remember it so clearly because I think I just watched the highlights a couple of days ago, and that was really some good batting. Everyone was pretty sure that Pakistan is out of this. So yeah, it's important while we're discussing this is how the tail enders, everyone down to the number 11 should get a fair chance when you go into the nets. Then of course when you come to the longer version of the game, you must be testing your tail enders with the new ball as well. Surely Northern needs 15 to 20 runs now. He's just not getting that pace. It's all credit to Fahim Ashraf, how he's targeting the stumps, how he's mixing it up well. And he's looking in rhythm, though he's gets first game today. He's looking good. And you rightly said, with just one more ball to go in the over and 6 to go after this. 151, it just seems very gettable from what we've seen in the standards in the tournament. Yeah, he'll be static with his performance today. He must be very happy. This time you hear the sound of the bat, the cracking sound, and all you can do is watch it sail over your head if you're standing at deep mid-wicket. That's a brilliant way to end the over. He connects one, and it's a massive into the stands. You can see sail over mid-wicket. No one had a chance. 157 for 8. This is the Northern story up till now. 157 for 8. They got one more over to go in the innings. They recovered well there in between, Shadab and Asif. Help them make more sense of their innings. At one point in time, the Northern side was looking in real trouble. Now the key factor over here from what we've seen about Northern is that they have a very good bowling attack.
And that is why they won a lot of games batting first. And somewhere in the back of the mind, the Central would know that they, earlier on in this tournament, were trying to chase a similar 150 odd target, and they were bowled out for 120. Yeah, they're a very good bowling attack, and the way the ball is doing a little bit enough for the pacers, and the northern fast bowlers who hit the seam, they will be very interesting. It will be very interesting to see them how they bowl. If you're captaining Central Punjab and you just try to look back into the games, you're saying, okay, where are my opportunities? Sohail Tanveer is not going to make it easy for me when he comes with his 4. Haris Rauf is amongst wickets. So I'm left with 12 overs to play with, where I can really attack. Yeah, and but the good thing for Central Punjab is Babar is there, and Abdullah Shafiq is in good form. They're good, both of them are very good technically as well. They got Mohammad Amir as well, Northern. Yeah, there you go, Mohammad Amir, yes. It's not about they won't go for runs. They're just smart bowlers with the experience. They just make it very tough for you as a batsman to get them away. 160 for 8 now. And this looks good, sensible. From an overall perspective of how Rawalpindi plays, batting first has been somewhere around in the late 150s, 157 or something. 157 is the average first inning score. All they need to tell themselves is one good big partnership. This is not a huge total, but once you get a big partnership in, which they are capable of. Well, that was a bad ball. I think it slipped out of his hands. He was trying to Yorker that ended up as a full toss. And it wasn't at a very comfortable height. Haris did well to smash it over mid-off. Yeah, very good smash over mid-off. These runs are handy for Northern because they're very good bowling attack. They didn't start it well. They'll be happy the way they are finishing. And these runs from Haris, last over he smashed 1-6, and now boundary over mid-off. Central Punjab's got to watch it. All the runs going out now are very valuable. Slow one. And that should be taken. The call is from long on. Yes, it's done. Nice and easy. Bags it. That's wicket number 9 that departs. It's Haris Sohail who has to walk back. Yeah, back on the hand, slow ball. Haris hit it high up in the air. And Irfan Niazi took the catch very easily. Haris goes for a handy 12 and Northern 165 for 9. Last ball. It's been played down to deep mid-wicket. Just a single that will be added to the total. So not a bad over this to wrap it up. Just a boundary and some singles going on. And that is how Northern will wrap it up with 164 for 9. And Central Punjab would be happy with the proceedings because they've not really allowed the Northern side to flex their arms in the last 5 overs. Would you be happy, Azhar, if you in the fielding side, that 164 is what you've restricted them? Yeah, I think so. With strength of Northern, you would see their strength goes really deep down, and you've seen them scoring 200s normally. But this pitch offered some seam movement for the Pacers. There was some moisture early on. You would have wanted to get them out for 150, but because of their bat so deep, they managed to score 165. But Central Punjab need to back themselves. They have a much stronger batting lineup now, and with more experience coming in, it's a very exciting context on offer.
Babar Azam at the time of the toss said that I'd like to restrict them somewhere around 150-ish. So he'd be happy, 15 more. And with his inclusion in the side, he will add value. So that's match 15, first innings, and we'll be back shortly with the reply and the highlights of the first innings. Welcome back to Rawalpindi. Here we are with match 15 and the first innings done just like this in front of you. Northern starting off with a bit of a hiccup. They lost their openers cheap, but then there was a partnership between Shadab and Asif Ali that gave them some respectability in the total. And then finishing off, Haris Rauf gets 12. 165 for 9 in their 20. And the bowling from Central Punjab, they're not really strong compared to Northern in their bowling, but they've done well. 4 wickets for Fahim Ashraf, who's played this first game today. 2 apiece for Usman Qadir and Ehsan Adil. And then Sohaibullah walks away with 1. The key was Usman Qadir's over. He got 2 wickets and stopped that flow. One point in time, it seemed they might get to 190.
and you can see the fall of wickets down here. Earlier there was a jittery start, but then there was a partnership right there between wicket 4 and 5. It's just 3 extras, 165 for 9. So the target for the Central Punjab team to win this match and score 2 points is 166. We'll be back shortly when Central Punjab is ready with the response. Good afternoon and welcome back to live action from Rawalpindi Cricket Stadium. We have an exciting game today happening between Central Punjab versus Northern. And what a delight to see that star batsman Babar Azam is back in the lineup, starting off the inning with Karman Akmal. And with me, such an honor it is for me to share live commentary box with ex-Pakistan cricket team captain, future legend Sanamir. How you doing? Thank you so much. I'm doing well, and you're totally right. I think it's going to be a fantastic second half because the target is very much defendable. I mean, at the moment the pitch is as such that it's going to be a contest between, I would say, Babar Azam and the rest of the bowling, because
Babar Azam and also Abdullah Shafiq, who has been extraordinary in this tournament. And with the kind of bowling Northern has, it's going to be a great contest. Most disciplined bowling Sana so far in the tournament, undefeated. The umpires are ready. Ehsan Raza has the ball in his hand and he is ready to go. But you have to see in the Multan leg, the unity Northern actually had, really well led by Shadab Khan, and they have such great rotation that even their bench players have come and performed. But it's a little tricky score, 160, 165 on the board, but very well coached. The team unity shows they enjoy their cricket. They are even shuffled their batting order in one last game, but they've got a couple of days break, and they're just reshuffling, talking about things. Change of captaincy today, maybe it will take an effect. Yeah, we'll see. Imad has been a very experienced captain for them. He has led them for the title in the last edition. So I think definitely the team unity is there. We saw the character of them, how they have come back after losing early 3 to 4 wickets, and they have come back and put up a decent score. So I think that is going to be a key factor, the kind of combination they have, the kind of confidence they have. Now the batters are coming into the crease. First time with Kamran Akmal, Babar Azam, it's going to be a good opening stand. Well, Kamran Akmal looked really well in his last game. He started this tournament very rusty, but having Babar Azam, T20 #1 batsman, back in the lineup with Kamran Akmal being back in form. And Sana, in this ground, 9.5 is usually the run rate. PSL 180 was chased both times. And as you saw, that maybe Northern had a lazy start, but Central Punjab lost a bowler in the middle through injury. Yet, they've managed to get a low score. But all depends on this man right here, the superstar, Kamran Akmal. As long as he's at crease, Northern will feel under pressure. And then not to mention, they got the captain, Pakistan cricket team captain, in opening with them, and then this young stunner, Abdullah Shafiq, coming right in. Yes, I think it's going to be a good test for the Northern bowlers also. This is the best, probably the best opening pair at the moment in this tournament. If you see the stats of Kamran Akmal, the way he has performed throughout, and then Babar Azam, definitely one of the top T20 batters around the world. So it's going to be a great contest with this quality of batting and this quality of bowling at play. Well, Sohail Tanveer looks ready to go. Has had a good tournament so far, using years of experience into effect, into action. The umpires are ready. It's a tricky score. Now in this, like, batsmen also have to build partnership. We saw in the last few games that Central Punjab was rolling, was looking like they're going to win the game. But then they lost key wickets. There was no set batsman there in the end. Today, maybe someone will step up. Yes, these are the most tricky targets. Beautifully shaped away from Sohail Tanveer first ball. Tentative push by Kamran Akmal, in my opinion. Yes, great shape. Slip is in place. Definitely Northern is not going to take this target lightly. A great shape on the ball here by Sohail. Sohail Tanveer was always known to just seam and swing the ball around really well, but hometown kid, he's brought all his experience back in his home ground. Now, Northern rested their bowlers now when there's been a 2-day break. So it's really good because they've been playing such back-to-back games recently, Sana. So this rest from Multan to coming to Islamabad will make an impact. And Sohail Tanveer looks ready to go with 2 slips in place. Again, a tentative push. This wicket is definitely still has something in it. The bounce is a little unpredictable. It's not like the bounce is not even. You see the last ball rising up and this one staying a bit low. Well, it's good that both batsmen should take time. New venue, new pitch. I think the reason why Northern made these early mistakes because they thought they're still playing in Multan, just going with the flow as they were before. But new pitch, new fresh pitch. Let's see how it goes through. Dropped at point. Looks like that was hit hard, and Shadab Khan dropped this catch of Kamran Akmal.
How crucial will this be? Only time is gonna tell. Great bowling, bowling with a 7-2 field in a T20, and then creating a chance like that. We'll only see with time how much this will cost the Northern team. Ooh, it just did not stick, Sana. But good effort by Shadab there. Great bowling according to his field. It's not easy to bowl with a 7-2 field in a T20 game. What do you say about, I mean, this kind of experience, this kind of skill Sohail is bringing to this side? With years of experience and maturity by Sohail Tanveer, if he gets hit for a 4 or a 6 where the fielders are, he'll take it on the chin. But if he's going to bowl a bad line and then get hit where there's no fielders, that really brings the morale down, and that's not how you want to start off this match. It's going to be interesting to see if they are going to keep this field for the last couple of balls also. And pushed, first runs on the board towards third man. Kamran Akmal ran hard the first one, but an easy single. There we have it, star-studded batsman Babar Azam, Pakistan cricket team T20 captain, finally at the crease in Rawalpindi Cricket Stadium. So the amount of dot balls already in this innings, 4 dots already in this over, tells us that the pitch is a bit difficult. It's not coming onto the bat, and as you see, they just catch this last ball. It was in the slot, it was there for him to catch, and Shadab has taken blinders before. He'll be gutted to drop Kamran Akmal on duck. Great over. Slow start by Central Punjab, 1 for no loss after the first one. Welcome back to live action. We are here for the second leg of this tournament. Haris Rauf is in the attack. Got Kamran Akmal out, agitated in their previous encounter before. And there was really good captaincy by him. They got their main man and they kept Central Punjab under pressure last time they played each other in Multan. Just a fiery start. Haris Rauf just bringing the express pace, bringing the heat, and it looks like he's ready to go. He has been so effective in Multan where the wickets were very flat. It's going to be very interesting to see what he can do on this wicket. Usually we've seen Imad open the innings with the ball in his hand, but this time just using, maybe because of the seam, because of the pitch. Yes, definitely. The kind of help the seamers are getting, I think he's giving the fast bowlers a try. Swing first off, just pitched it up. Kamran Akmal not over the ball. Just see this. Just a beautiful outswinger first off. Do you think they're going to be bringing some tilt swing, reverse swing in the end of this match today, Haris Rauf? Just for this ball to start with, the kind of line and length I think he's hit with the first ball, that's really good. And we'll see with the reverse swing, they are an experienced side, good coach. So I'm expecting that. Flight over slip for the first boundary this over. Umar Amin just went Superman up trying to catch that ball, but just went over his head with that extra pace. Went to the boundary so much quicker. So Kamran Akmal has been given another life. He must be very happy at the moment with the kind of result he's having. He could have gone out on this ball, but has got 4 runs instead. Haris Rauf just brings this intensity, this intense, Sana.
like you just can feel that every ball he's going to bowl, something is going to happen. Yeah, he brings in the belief, and you can actually feel it. We've noticed on this pitch that any room batters are going to get, they're just going to slash their hands. So key, that disciplined bowling that Northern has done so far is bowl wicket to wicket with experienced Shadab and even Nawaz bowling. What do you think are the keys to success for Central Punjab to win this match? I think the number one key would be this partnership with the experience of Kamran Akmal and Babar Azam, and then Abdullah Shafiq also. They need to carry the batting till the 20th over. They have had good partnerships but not have finished properly. Another dot ball for Northern. Now, very well said, Sana. Like, they've lost their middle order. Their middle order has been under pressure again. They've been set and they've been losing their wickets when they need to be responsible towards the end. Yes, I think with Saad Naseem not performing, that has been very crucial for them, because being the vice captain now, captain in the previous games, he not performing is the missing bit of piece in their batting order. I guess if he can get some runs, Abdullah Shafiq is batting brilliantly, and then Qasim Akram also in the late order. Quick bouncer by Haris Rauf there. Not to forget the inclusion and the boost that Fahim Ashraf is going to give them down the order that they were lacking completely in the last few games. Brilliant bouncer here. Not enough time for Kamran Akmal to duck properly. He's almost fell off with the pace of Haris Rauf. Definitely Fahim Ashraf has performed really well with the ball, and he might be able to bring that confidence into his batting, which is much needed for Central Punjab. Tentative start by Central Punjab again. 5 for no loss after 2. Oh, they look like they got an overthrow. They look like they got 4 runs overthrow. For a change, a boundary of the last. 9 after 2 overs, Central Punjab. Sohail Tanveer back into the attack. All these dot balls, Sana, and they're not getting any runs, but with an overthrow, they get 9 runs on the board. Yes, that too on the last ball of the over. Haris Rauf was definitely not impressed. He had his hand on his hips. Let's just take you back. Just watch this easy throw to the keeper. Regulation, it just goes, whoa, over the top. No fine leg watching. They thought it's the end of the over. And there's 4 runs, easy for Kamran Akmal. Luck is on the side of Kamran Akmal today. Beautifully placed. Just pulled off the front foot, just waited for that ball with beautiful balance by Babar Azam, and he gets off the mark with the boundary. Now that's a combination of awareness of cricket and great skill. He knew there were only 3 fielders on the leg side, no one at the deep on the leg side. He just put the ball into the gap, and 4 runs for Babar Azam and his team. You could just see him shuffling across the off stump to make that angle. Yes, and he's coming back in with good form for Somerset, a century for him in T20s. Shot of the day. Babar Azam with that high elbow on the up pitch ball for another back-to-back boundary. Just showing you the class today, why he's #1 in T20, Sana.
exquisite timing. He's now number 2 in T20s, but exquisite timing. Just look at just a slight push into the gap, 4 runs, beautiful batting. Just waiting for the ball to just come to him. He looks like he has all the time in the world. He has Sohail Tanveer's number, start of this over. Again, improvising, coming down the wicket, making sure that he plays the ball into the gap. Great batting. Well, Central Punjab, after a tentative start to the power play and getting those 4 overthrows, have been onto a flyer this over, and we know they need to have a attack mode dynamic power play with keeping their wickets in hand as they lose in the middle overs. But just the boost today by Babar Azam just being in the middle. I agree. I mean, this is why T20 cricket is so amazing, because that one overthrow shifted the momentum towards Central Punjab, who were under pressure before that. Another misfield by Northern, and just looking a little sloppy today. Just a drop catch, an overthrow, a misfield which should have been a dot ball. Looking a little different today than the usual Northern champions that they are. Even though there's no crowd, but I think they might be taking the home ground pressure, it seems, because they have been really good in all 3 departments in Multan. So far they played fearless cricket. They've really enjoyed their fielding together. Up in the air, keeper underneath it, and he drops it. Kamran Akmal with another life today. What did he eat for breakfast? I think he's got a lot of prayers today from I don't know whoever. 3 chances in 3 overs. At the moment, it's a skyer. It was up there for the grabs. Too much time for the keeper. But I think because of the sunset, the lights, he was nowhere in the position, still moving while the ball was coming into his hands. 20 for 3 after. Mohammad Amir into the attack, first ball. What a classy shot off the pads, first off for a boundary by Babar Azam. He looks apart. He just shows, this shot shows why he's at the top in the world. Why is everyone talking about him with Virat Kohli and Kane Williamson, people like that. Just look at that balance and execution. Brilliant batting. Just look at the flick of the wrist on the ground, head over the ball, ready to go into his rhythm. Beautiful start by Babar Azam. This is the punch that Central Punjab needed. Kamran Akmal being dropped once again. Everything is looking good for Central Punjab already. Yeah, they must be really happy, especially Kamran Akmal. A little football by Mohammad Amir, but that hit him really hard. Straight off the middle of the bat. I hope he's okay. All the youngsters watching, never put your foot into the ball, especially when it's so well timed. Just look at this timing with the straight bat, Babar Azam back to the bowler, and Mohammad Amir trying to stop it with his foot, which was not the best of ideas. It hit him, I feel it just hit him right with the ankle, just right there. Try to stop a boundary.
cost him an ankle, which I hope he's okay. He's a fighter. He fights through injuries and bowls with intensity. But that must have hurt. That must hurt, and hopefully he can come back and bowl this over and bowl for the rest of the match, because his bowling is going to be very crucial if they want to defend this target. The spray the doctor's about to use, Sana, this also hurts. It just stings, yeah? Yeah, I think the most difficult is when you get hit on the shins and the ankles. I've been hit like that sometimes, but yeah, it's quite tough. Firstly, just watch this beautiful straight drive by Babar Azam, and just the effort to stop 4 runs by Mohammad Amir. Just hit him right on the spot though. Yeah, just a check shot, beautiful balance, beautiful follow through, just a check shot, but then Amir, not most intelligent way to stop the ball, and hopefully he can get back on his feet and continue. Now, I really do want to see how has Kamran Akmal been so lucky today with 2 drop catches, first at point, and then the second, the flyer up in the air with the keeper underneath, Rohil Nazir, who's been safe hands and has taken some beautiful catches this whole tournament. But just seeing the ball up in the air when you just placed underneath it, thoughts come in your head, I think. Yeah, I think these skiers are the most difficult one to take when you have time to think, because the catches that are flat, that don't give you any time, they just stick sometimes. But these kinds of catches, when you have got time to think, become the most difficult ones. Yeah, just like that, Kamran Akmal thought he's gone. He was walking away almost, but then this happened. He got safe hands, but not today. A little buttery slippery today. But usually, this is the kind of momentum, this is the kind of luck a team needs to shift momentum, to really get themselves going. They've been struggling this whole tournament, but it's a new leg, it's a new stint today. New power batting lineup. It's going to be a costly mistake for Northern to drop these catches. It does not matter how you start off the tournament. It really matters how you end it. And today, they've looked a little lazy. Yes, a very good point by you, because these kinds of... Yeah, because this kind of tournament, it's very important to keep that momentum in the last leg of the tournament. Going into the knockouts with semi-finals and finals, it's very important to have that momentum on your side. And if they, with the new captain coming in, and if they lose this match, it's going to shake up the team a little bit. We saw in the previous matches how Shadab brought the energy and the team followed through. We want to see this today too. Another play and a miss. Well, we're just seeing that partnership is building. Central Punjab has always been a great team. They won the first game with heroics by Abdullah Shafiq with the 100. But after that, he's been set a few innings. This is the time for him to step up, make his mark, show the selectors that he can finish off the game. He loves a run chase, and every single match he's played with bat on ball with good intent. Just swinging away today, all over the place. Yeah, everyone almost missed this ball. Even the keeper got confused. Coming back to Abdullah Shafiq, okay, this ball again, it swung in the air. Babar Azam was not expecting this from Amir. I think that's why he missed this ball. Babar Azam usually expects good balls and great balls. He plays defenses this was just a wayward ball. Yeah. Amir on the money this ball though. Last ball of the over. Good run here. Coming back to Abdullah Shafiq. I think he's a great talent. 25 for no loss after 4.
बाबर आजम बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। एक और शानदार स्ट्रोक उन्होंने खेला, बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे लेफ्ट आर्म सीमर्स को या राइट आर्म सीमर्स को। मैदान के दोनों जानिब दिलकश स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। अजहर अली मेरे साथ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान। बहुत ही खूबसूरत शॉट, क्रिकेटिंग शॉट्स पर रिलाई करते हैं बाबर आजम, और बहुत ही जो देखने वाले हैं उनको दिलकश स्ट्रोक्स लगते हैं उनके, जब वो फुल फॉर्म में हों। और आज वो एक ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और इस तरह के पिच पे ऐसे ही अच्छे बैट्समैन रन्स बनाते हैं। पुल किया इस बार, इस गेंद को आड़े हाथों लिया बाबर आजम ने बैकफुट पर। एक ही फील्डर थे मिड विकेट पर दायरे के अंदर, और उनके सर के ऊपर से खेल दिया। बाबर आजम की क्वालिटी है कि लेंथ बहुत जल्दी रीड करते हैं, और थोड़ा सा बॉल शॉर्ट था और बहुत जल्दी बैकफुट पे गए। इतना भी जिसको कहते हैं कि बॉल शॉर्ट नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी बैकफुट पे गए और ज़बरदस्त तरीके से टाइम किया मिड विकेट के ऊपर से। फील्डिंग में अभी कोई रद्दोबदल नहीं है। स्क्वायर लेग पर जो फील्डर हैं वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर हैं, थर्ड मैन भी बाउंड्री पर। कामरान अकमल बहुत बेचैन है, पावर प्ले की आखिरी गेंदें हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आज खुश नसीबी ने भी उनका साथ दिया। बिल्कुल, और 3 चांसेस मिल चुके हैं अभी तक कामरान अकमल को, और आज लगता है उनका दिन है। लेकिन तारिक, जिस तरीके से बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, उनके सामने दो बड़े ज़बरदस्त बॉलर आमिर, सुहेल तनवीर अच्छी बॉल को मूव करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी बेस बनाते हैं, जिस तरीके से वो बॉल को टाइम करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है बॉलर के पास। उनका मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत कम रह जाता है। एक ही रन यहाँ पर मुमकिन होगा। फील्डर बर वक्त पहुँच गए थे। कामरान अकमल ने पहले मैच में बड़ी शानदार मिस सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उसके बाद बुझे से रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम की अदम मौजूदगी में यही ख्याल था कि जो बाकी मादा नौजवान बैट्समैन हैं वो इनके गिर्द खेलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कामरान अकमल बहुत एक्सपीरियंस और इस फॉर्मेट के बहुत ही ख़तरनाक बैट्समैन हैं। PSL के हाईएस्ट रन गेटर हैं। डोमेस्टिक सीजन में जितनी भी T20 क्रिकेट होती है बहुत रन्स बनाते हैं। अच्छा डिफ्लेक्ट किया, बाबर आजम पहुंच गया अपनी क्रीज में। अच्छी थ्रो फेंकी थी मोहम्मद आमिर ने, लेकिन बाबर आजम किसी तरह का खतरा मोल लिए बगैर पहले से ही तैयार थे। अच्छी थ्रो मोहम्मद आमिर की तरफ से, लेकिन बाबर आजम बड़े आराम से क्रीज में पहुंच चुके थे। और स्ट्राइक जो रोटेट करना है बाउंड्रीज के साथ साथ, ये सेंट्रल पंजाब को विकेट्स हाथ में रखने हैं, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है इस वक्त। जब तक पेसर्स बॉलिंग कर रहे हैं तब तक इनको विकेट्स नहीं गंवाने। ये दोनों इसी कोशिश में हैं कि पावर प्ले जीता जाए। 51 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए नॉर्दर्न ने। यहाँ अभी 1 ओवर बाकी है पावर प्ले का, 36 पर कोई नहीं। ये देखिए शफक का टुकड़ा लग चुका है, और यहाँ बड़ी आला बैटिंग हो रही है बाबर आजम की जानिब से। बाबर आजम जब खेलते हैं तो ये सिर्फ यही निगाहों का मरकज़ बन जाते हैं। दूसरे एंड पर भी बहुत महसूस होता होगा बैट्समैन, आप तो इनके साथ बहुत खेले हैं अजहर।
बिल्कुल। और कभी कभी आपको लगता है दूसरे एंड से खड़े होके कि बैटिंग कितनी आसान है, और शायद आपको उतनी आसान नहीं लगती जब आप खेलते हैं। और एक से आप जब दूसरे एंड पे भी खड़े होते हैं और एक फ़ैन की तरह उनको देख रहे होते हैं। शानदार पुल शॉट, बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं। ये जाज़िब नजर स्ट्रोक था बाबर आजम का। बहुत पीछे था ये बॉल, इजी पिकिंग्स फॉर बाबर आजम। एक ठप्पा खाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन से पार कर गई। और जिस फॉर्म में बाबर आजम इस वक्त हैं और जिस तरीके से वो आज खेल रहे हैं, इस तरह की लेंथ जो है वो बहुत मुश्किल होगी कि वो बॉलर जो है वो बच सके। अच्छा सिंगल लिया, मुसलसल फील्डर्स को परेशान किया हुआ है। रनिंग के मामले में भी बाबर बहुत तेज दौड़ते हैं। और ये जो स्ट्रोक था मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को तकरीबन फ्रंट फुट से ये पुल शॉट खेला गया। इससे पता चलता है पिच कितनी ट्रू है। गेंद स्क्वायर के सामने गई शॉट लगने के बाद। इसमें ज़्यादा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बाबर अपनी पोजीशन सेट करते हैं, बहुत जल्दी कमिट नहीं करते अपने आप को फ्रंट फुट पे, तो वो उनको अलाउ करता है कि इस तरह मैनेज करें इसी तरह की लेंथ को। और कामरान अकमल बैक फुट पर आज भी उतने स्ट्रांग हैं जितने के इस सदी के शुरू में थे। इस एरिए में तो ये ख़ानदानी शॉट है इनकी, अकमल फैमिली की, और ये यहाँ पे मिस नहीं करते। हालांकि फील्डर का हाथ लगा था, लेकिन इतनी पावर इनकी शॉट में होती है स्क्वायर ऑफ द ऑफ साइड कि फील्डर के लिए बहुत मुश्किल होता है रोकना। और कामरान अकमल भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म बहाल करते हुए। स्क्वायर के दोनों जानिब फील्डर्स को मसरूफ़ रखते हैं। शादाब खान हालांकि पॉइंट पर हैं, दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में से एक हैं, लेकिन कामरान अकमल के सामने आसान नहीं होता इतने पाए के फील्डर को भी फील्डिंग करना। मोहम्मद आमिर, इनकी रफ्तार पहले जैसी नहीं रही। इंग्लैंड गए थे, वहाँ भी वो दौरा इनका 8 गेंदों तक महदूद रहा। टेस्ट क्रिकेट अब खेलते नहीं हैं, ज़्यादातर 4 ओवर्स करते हुए नज़र आते हैं। आखिरी गेंद पर फिर एक रन हासिल किया। 6 ओवर्स और पावर प्ले मुकम्मल हो गया। 47 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। शाम के साए अब आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते जा रहे हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर, और एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला पनप रहा है। नॉर्दर्न जो फेवरेट है, हॉट फेवरेट ये टूर्नामेंट जीतने के लिए, सेंट्रल पंजाब का आज चैलेंज उन्हें दरपेश है बाबर आजम और कामरान अकमल के रूप में। सेंट्रल पंजाब ही वो वाहिद टीम है जिन्होंने नॉर्दर्न को पहले हराया हुआ है, और आज भी ऐसा लग रहा है अच्छी बेस बना दी है दोनों बैट्समैनों ने। और जैसे जैसे स्पिनर्स आएंगे और बॉल थोड़ा पुराना होता जाएगा, इस पिच पे बैटिंग करना और आसान होती जाएगी। और इनको सिर्फ सेंट्रल पंजाब को ये करना है कि विकेटों को अपने हाथ में रखना है। गेंद साफ साफ लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी। विकेट कीपर का भी झुकाव उसी तरफ था, इसलिए एहसन रजा फौरन ही अपनी जगह से हट गए। शायद ये बल्ले से भी लगी थी, शायद काफ़ी नज़दीकी मामला हो सकता था ये बाबर आजम के लिए। उगली था और काफ़ी ऐसा लग रहा था कि लेग स्टंप को बॉल हिट कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल बल्ले का इशारा अंपायर की जानिब से। ऐसी पिचेस पर जहां पर
गेंद ज़्यादा टर्न ना हो रही हो अजहर, जैसा कि रावलपिंडी की पिच है, तो स्पिनर्स पर अंपायरिंग करना आसान नहीं हो जाता अंपायर्स के लिए। सुहेल तनवीर ने गलती की जिसके नतीजे में ये दूसरा रन बन सकता है। कामरान अकमल को जल्दी करना पड़ेगी। इस तरह के टोटल के ऊपर एक एक रन फील्डिंग ने रोकना है, लेकिन शादाब खुश नहीं होंगे सुहेल तनवीर के इस फील्डिंग एफर्ट से। ये अंपायरिंग तो कहीं पे भी आसान नहीं है, लेकिन जहाँ पे टर्न ज़रा कम हो रहा हो तो आपको ज़रा आइडिया अच्छा हो जाता है कि गेंद कहाँ फिनिश करेगा। इस बार कट शॉट, बड़ी अच्छी टाइमिंग और प्लेसमेंट इंतहाई आला। हारिस रऊफ और सुहेल तनवीर के दरमियान गेंद को खेला, दोनों को 22 तक करके रख दिया कामरान अकमल ने। 50 रन पहले ही दोनों के दरमियान बन चुके हैं। दो टैलेंटेड कजन्स के दरमियान ये पार्टनरशिप है। और कप्तान कह रहे होंगे नहीं भी नहीं, यहाँ नहीं बॉल करना, यहाँ तो कामरान अकमल आपको पूरा दिन मारते रहेंगे। और बहुत ही आसान कैच, रिटर्न कैच है। वापस शादाब के चेहरे पर हम मुस्कान देख सकते हैं। कामरान अकमल का इस मर्तबा कैच जाहिर है कि शादाब खान नहीं गिरा सकते थे, अपनी बॉलिंग पर कोई ऐसा नहीं करना चाहता। एक आसान कैच शादाब खान के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त बॉल किया उन्होंने। ये रॉन्ग वन था, गुगली किया, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे कामरान अकमल, शायद गुगली रीड नहीं कर पाए और एक अच्छा स्टार्ट लेने के बाद 21 रन पर आउट हो गए। सेंट्रल पंजाब 54 पर 1। कामरान अकमल के आउट होने के बाद अब्दुल्ला शफीक आए हैं बैटिंग करने के लिए और इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में भी हैं और इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर भी हैं और मेरे ख्याल में बाबर के साथ खेलने को उनकी ये ख्वाहिश भी होगी और आज उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। अब दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो बॉल के मेरिट पे खेलते हैं और अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, तो देखने वाले के लिए ये है कि अगर ये थोड़ी देर खेलते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इमाद वसीम इस वक्त अब्दुल्ला शफीक के सामने होंगे। पर अब्दुल्ला शफीक इमाद वसीम ज़्यादा जगह नहीं देते, आपको कट करना या पुल करना मुश्किल हो जाता है इनके सामने। इसी सूरत में बाबर आजम के सामने बड़ा शॉट खेलने का क्या रास्ता रह जाता है, क्योंकि पावर प्ले खत्म होने के बाद ये हवा में शॉट खेलने से इज्तनाब करेंगे। ये देखिए गुगली फेंकी, बिल्कुल फ्लाइटेड गुगली थी, कामरान अकमल पहले खेल गए और आखिर में देखिए इससे ज़्यादा आपके लिए आसानी होती नहीं क्रिकेट फील्ड पर जितना ये आसान कैच था। शाबाश 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 बॉयज। अब एक पार्टनरशिप दोबारा से बनानी पड़ेगी इन दोनों बैट्समैनों को, क्योंकि बहुत बड़ी दोनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। इस बैटिंग लाइनअप की बैकबोन है ये दोनों। शादाब खान गेंद को हवा दे रहे थे, इमाद वसीम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ स्पिनर हैं। नई गेंद तो पुरानी गेंद हो, नई गेंद हो, टर्न करना बहुत कम टर्न करते हैं, ना होने के बराबर। इस पिच पर जो स्पिन बॉलर है उसकी रफ्तार होनी क्या चाहिए आइडियल अजहर?
ऑब्वियसली आप देखते हैं कंडीशन और चेंज ऑफ पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक पेस पे आप बॉल कर रहे हैं तो बैट्समैन आपको तोल सकता है हिट मारने के लिए। आपको बस पेस में चेंज लानी है, थोड़ा सा लेंथ में थोड़ी सी चेंज लानी है और एयर में डिसीव करने की कोशिश करनी है बैट्समैन को। इमाद क्योंकि तेज़ बॉल करते हैं, एक आधा बॉल जब ये स्लो करते हैं तो बैट्समैन की टाइमिंग में फ़र्क आता है। इस बार क्रीज से निकलकर खेला दो फील्डर्स के दरमियान और आखिर में प्लेसमेंट इंतहाई शानदार थी। एक और जाज़िब नज़र स्ट्रोक बाबर आजम का, काबिल दीद बैटिंग उनकी जारी है। बिल्कुल एफर्टलेस शॉट था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गैप तलाश किया, सिर्फ बॉल को मिडल किया गैप में और 4 रन हासिल किए। 8 ओवर में 60 पर 1 सेंट्रल पंजाब। $62 for 1 in the 9th. Baba looking ever so good, 38 not out. It's just that one wicket of Kamran Akmal that they've lost. This Kamran looked a little out of sorts today. Dropped at one point. Last 2 innings, the dismissals have been pretty soft. Once again today. Waited for that one, hit in the flight and taken down at long off. Just about when we were saying how special Abdullah Shafiq looks, I think the moment has just taken better of him. It was too early to play this shot. We had a set batsman who's looking good at the other end. Just rotate the strike early on your innings. But again, unfortunately, this youngster has to go. Not a great shot selection. Simple catch, but the fielder has at mid-on. Beg your pardon, mid-off. 62 for 2. $62 for 2. Target is 166. Required run rate just over 9. They have 8 wickets in hand. And a lot depends on the skipper now. Babar Azam, who's looking good. He's on 30. He's on 38 of 27. Time around, Fahim Ashraf opens his account. He's been promoted into the order. First game for him in the National T20. Bowled well. That's the wicket of Abdullah Shafiq. I guess we've been talking about how talented this young boy is. But it's just a fact how you get a license to hit everything in the T20 format. You need to select those deliveries as well. Bit of turn. Another single. They need a couple of good overs here, and of course a partnership is required. The skipper is looking good. Babar Azam 39. Fahim Ashraf promoted up the order. We're into 9th over now. Nine gone, 64 for 2.
शाबाश शाबाश इसकी बारी थोड़ा बाहर रहो मैडी भाई आप भी बाहर रहना शाबाश शाबाश मैडी भाई बाहर रहना अली भाई थोड़ा बाहर बस Spin बस continues as Imad Wasim is in operation now. बढ़िया बढ़िया मैडी भाई एक्सीलेंट एक्सीलेंट बॉय It's just so important, you probably agree, that when we're talking about how the batsmen have a license to go after the bowling in a T20 format, but as a youngster, someone like Abdullah Shafiq, you need to learn the art and the craftsmanship of how and when to use that long handle. And just probably that's the difference between you as a youngster and a Babar Azam when you graduate to that. And also awareness about the game, about the situation, okay? Set batsman is batting. The most experienced batsman is batting in front of me. He's on 30 or 8 not out. I'll just give him a strike. And meanwhile, couple of singles, couple of overs, I get my eyes in, I get settled in, and then I can play my shots. Again, he's a youngster. It's a learning curve from him. But sooner the better. It's picked up nicely. It was there to be hit. Slightly short on the legs. No problems for Fahim. I was a bit surprised to see Imad Wasim not taking the new ball. He does it for Pakistan, he does it for Karachi Kings in PSL or any other teams he plays for. Today, he decided not to take the new ball, and that wasn't the best delivery against the left-hander. Shot beautifully picked up by Fahim Ashraf. Coming back to the batsman, unless you're a Chris Gale or a Shehzad from Afghanistan, where you take the pitch and the length out of the equation, you're just a power hitter. You've got to really be careful as to which ball you select for the big hits. थोड़ा सा बाहर चलो चलो शादी भाई Pushing for the second. Throw has to be good, but there's a big gap because the sweeper cover is really deep. शाबाश 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 शादी भाई शाबाश शाबाश मैडी भाई 72 for 2. One ball to go. The 10th over. Another single. That's why he's so good and so consistent, Babar Azam. 10 overs gone. 73 for 2. That's the worm. You're going well. Suddenly you feel a bit of a dip down there. You need to catch up on that worm. Versus Central Punjab. This is a good platform for Central Punjab to come back into the tournament. Double league tournament. Everyone plays each other twice. So you've got good time to catch up, even if you're just 2 points on the table, like Central Punjab is. They've got 5 games, including this one, so they can go up to 12. So you're not out of it. Even Southern Punjab, who've lost all their games up till now, they have 5 matches, you can go up to 10. Look at that. What a beauty from one of the best in the business, Babar Azam. One of the quickest bowlers, 10 wickets in this tournament. The best bowler from Northerns. And look at that shot. It made it look so easy, Babar Azam. Treat to watch. He's been very good, Haris, in cleaning up the tail. On this occasion, a top batsman that your country has, he stands tall in front of the bounds and just dispatches that at will. It's a different situation. He's playing against one of the best in the world. The length has to be very, very consistent, and this is the length. If it's not swinging, if it's not seaming, try to just aim off stump every time, back of the length.
Would you advise someone like Haris Rauf or bowlers who are super quick to develop variations or completely rely on the pace that you have? I think in this format you got to have variation. It depends on the situation. If you want to get wickets, variations ain't gonna work. If you are defending and you need a wicket, maybe then. But if you're defending a low total, then you need to hit the deck every time. So again, the young kids, they're learning. Nicely played. That is go-to shot. He worked really hard on it. This shot, Babar Azam. It's not a easy shot to play. Yeah, you're right about that. So easily you can chop one onto your stumps. He plays it, lets the ball come as close as possible to him, and he plays it very, very fine. He covers his off stump. He doesn't play from away from his body. He covers his off stump and then he waits for the ball to come onto the bat. There was a bit of question mark that was being asked not very long ago, that the strike rotation after the power play was a bit of a problem for him, but he's worked it out, like you said. How important are these strike rates in modern day cricket when you're talking about T20s? The people start calculating what are you doing in the power play, what are you doing after that, and how much can you flex your muscles in the last 5? I mean, top players of the world, most of them are 130, 35 plus strike rate. And it depends what sort of role you got given by your team management, by your coach. That either you're the guy who's going to stay till the 15th, 18th over and have the other ones at the other end to have a go. Short delivery will be wide. He's not having a good day behind the stumps, Ruhail Nazir. They're going to come back for 2. Yeah, they're going to settle for 2 in fact. Yes, one of the over. One of the over. It was too short. Easy. He's got a good Yorker as well. He usually uses that in his second spell against the lower middle order. Ruhail Nazir, yeah, you said he hasn't really been impressive with the glove work today. He's But, good. another very talented cricketer, Ruhail Nazir. Again, from the ranks of Pakistan under 19 cricket. That's a Yorker you were talking about. He's more lethal, Haris Rauf, and it's reversing with his Yorker. But again, he's got the control, and that's why he's kind of a wicket-taking bowler for his team. Beautifully bowled and comfortably played in the end by Fahim Ashraf. What's good about him is that we've been discussing this, the intensity that he has. Even if it's a PSL game or an empty house, a wicket for him means equally the same. Got those big celebrations going on. Sometimes you feel it's over the top. Talk about celebration, talk about over the top. That got to be Imran Tahir. I remember, we'll come back to it after this over. 11 overs gone, 82 for 2. (82 for 2). Required run rate 9.33. Babar Azam is looking good. 2 shy of his 84 of 54. 2 shy of his 50. Playing his first game. It's national T20. Coming back to the celebrations I was talking about, Sikandar, you were talking about over the top. Imran Tahir is definitely over the top, but that's his style. I like it. I enjoy it. And everything should come naturally. Yeah, everything is the World Cup for him. I mean, he takes a catch or he takes a wicket. Imran Tahir, he'll take a victory run all the way to the boundary. I mean, a couple of years ago when he played for Multan Sultan, he got a hat-trick, performed brilliantly. One game he got a wicket and he just disappeared. I said, "Oi, get back."
A horizontal bat shot. He sort of slapped that. He's outside the off stump. Just the art of finding that gap, Babar Azam. Brilliant boundary and a 50. It was a brutal shot from one of the best in business, Babar Azam. He's on 52 of 35 deliveries with 9 fours. Strike rate of just over 148. With Ahmad Azam's pace, not the delivery to ball. He's a slow medium pacer. It was short, it was wide. Puts one left leg down at the pitch of the ball and he just plays that one behind the square on the onside. Wow. 91 for 2. 2 boundaries in a row from Babar Azam. 9 runs from the over already. Required run rate had dropped down to 8.82 now. They need partnership here. That's it. That's the class of Babar Azam. He makes those shots look so effortless. There's always some classy bit to his shots. He looks comfortable while playing them. He never looks like falling over. And there's no brute force. He's got so much time available. Calling for the second. That's well run. Any top players plays for your team. It lifts the spirit of the whole group, and that's what exactly happened with Central Punjab here. They need 73 of 50 with 8 wickets in hand. Babar Azam looking good as always. 58. Fahim Ashraf promoted up the order. He's on 8. It's a good option to have, you know. When you talk about Karachi Kings, he opens for you. You probably just have to ask the rest of the team to score 130 and he'll take care of the remaining 50-40. That's what his job is for Karachi Kings. Stay there till the 15 overs and then all the players can play around positive cricket. Because in T20 format, you can only kind of put pressure on the opposition when you get wickets. Single to end the over. It's 94 for 2. बाबर आजम की विकेट बहुत ज़्यादा वाइटल हो गई है। ये जिस भी टीम के लिए खेलते हैं कोशिश यही होती है हरीफ टीम की इनको जल्दी वापस डगआउट में भेजा जाए और वो इसलिए खैर मकदम किया। इस दूसरे स्पेल में शादाब खान को ज़ोरदार छक्का लगाकर बाबर ने बता रहे हैं बाबर आजम इस वक्त अपनी टीम को भी और दूसरी टीम्स को भी कि चेस कैसे किया जाता है। जी हाँ, ये 10 दरख्त लगेंगे। बाबर आजम जो हैं कई मरतबा चार्ज करते हैं लेग स्पिनर को, लेकिन इस बार घुटने के बल उन्होंने शॉट खेला। बड़ा अच्छा यही इनको बड़ा बैट्समैन बनाती है, छक्के के बाद स्ट्राइक को रोटेट करना, अपनी बैटिंग में तवाज़ुन लाना। यहाँ पर सेंट्रल पंजाब के 100 रन मुकम्मल हुए, 2 विकेटें गंवाई, 12.2 ओवर सर्व किए। ये अच्छी शरह है आगे बढ़ने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाउंड्री के बाद दोबारा से एक अच्छे बॉलर के ऊपर चार्ज नहीं लिया। पता है शादाब खान इस वक्त 2 विकेट्स ले चुके हैं, स्ट्राइक बॉलर हैं, तो बड़ी सेंसिबल बैटिंग, एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप इस चीज़ की थी। कोशिश यही अब करनी चाहिए बाबर आजम को कि वो ये मैच फिनिश कर कर आएँ। इस सूरत में अपनी सेंचुरी भी कर सकते हैं। तो टीम को अभी भी 64 रन की ज़रूरत है। अभी समरसेट के लिए भी इन्होंने सेंचुरी स्कोर की है इंग्लैंड में, वहीं से एक अच्छी फॉर्म लेके वापस आए हैं पाकिस्तान। जी हाँ, जब ये गिलमॉर्गन में खेल रहे थे तो वहाँ पर इन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई। 114 रन की इनिंग्स खेली थी, जो बाबर आजम का बेहतरीन स्कोर भी है T20 क्रिकेट में। वक्त के साथ बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं
और ये लेफ्टी राइटी से फील्ड की पोजीशंस को भी प्रॉब्लम हो रही है। ये गूगली कोई जवाब नहीं था, रीड करने से कासिर रहे। इनकी गूगली जो है वो लेग स्पिन से ज़्यादा तेज़ी से स्पिन होती है शादाब खान की। बहुत निप्ट बॉल में नज़र आ रही है, आप देखें कितनी अच्छी रोटेशन है। फहीम अशरफ एक बार फिर लकी रहे, स्लिप में कोई फील्डर नहीं था, 4 रन्स मिल गए, लेकिन ये पूरे एतमाद अंदाज में खेला गया स्ट्रोक बिल्कुल भी नहीं था। ये एक और गुगली थी, मुसलसल दूसरी बार ऐसा हुआ जब किस्मत ने यावरी की। बिल्कुल, T20 एक मुश्किल फॉर्मेट है बॉलर्स के लिए, जिसमें एक ऐसी बॉल जिस पे विकेट हो सकती थी उसमें 4 रन्स आ गए। 13 ओवर के बाद 107, 2 खिलाड़ी आउट। शाबाश मेडी भाई। चलो 107, 2 खिलाड़ी आउट। मुकाबला बहुत कांटेदार हो रहा है। कप्तान ने माद आ गए हैं और दूसरा रन फहीम अशरफ ने मुकम्मल कर लिया। पहला रन बर वक्त लिया था, सही अंदाज में वापस भी मुड़े थे, क्योंकि वो जानते हैं कि बाबर आजम ज़रूर आएंगे एक मरतबा फिर स्ट्राइक पर। बड़े अच्छे 2 रन्स, बहुत अच्छी अवेयरनेस क्रिकेट की, पता है फील्डर्स बाउंड्री पे हैं, तो हल्का सा चिप करके हल्का सा गैप में डाल के अच्छे 2 रन्स लिए और अब फिर एक सिंगल रन। तो स्ट्राइक रोटेट हो रही है, स्कोर रुक नहीं रहा, अगर बाउंड्री नहीं भी आ रही तो सिंगल डबल्स हो रहे हैं, बहुत प्रोफेशनल चेज। फहीम अशरफ जो हैं वो ज़रूर वार करेंगे अब इमाद के ख़िलाफ़। शादाब ज़ाहिर है कि उनके लिए उनको रीड नहीं कर सके थे। ये मिड विकेट की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ ज़रूर हिट करने की इनको कोशिश करेंगे हवा में। पुल किया, गेंद 2 फील्डर्स के दरमियान से चली है 4 रन्स के लिए। बहुत ज़रूरी बाउंड्री थी, 50 रन्स की ये पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई। बैट बॉल्स को बहुत अच्छा डिस्पैच किया आज पूरे दिन। जो भी बॉल थोड़ा सा भी पीछे गिरा है, स्पिनर का ख़ास तौर पे, उसके ऊपर बाउंड्री लाजमी आई है, ये हमने देखा है। बट शुरू में अच्छी बॉलिंग की स्पिनर्स ने, शादाब ने ख़ास तौर पे बड़ी अच्छी लेंथ हिट की, बट इमाद इस वक्त थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ बॉल कर रहे हैं। ये वाइड होनी चाहिए। इंग्लैंड के दौरे में फहीम अशरफ हमें खातिर नज़र नहीं आए थे खेलते हुए, क्योंकि कंधे की तकलीफ भी थी। वो ज़ख्म अब इनका मुंदमिल हो गया है और इस वक्त जो इत्तलात हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े हैं वो चाहते हैं कि ये हर टीम में, हर डोमेस्टिक टीम में पहले 6 नंबरों में बैटिंग करें। इससे आज इनको चौथे नंबर पर खिलाया जा रहा है ताकि इनकी जो बैटिंग सलाहियतें हैं वो फिर से उभर कर सामने आएँ, जो दब गई हैं। ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि अगर आप बाहर की टीम्स का देखें, उनके जो लोअर ऑर्डर बैटर्स और बॉलर्स हैं वो अपने अपने रीजन से जनरली टॉप 4 में ही खेलते हैं। अगर उनकी लड़कियां भी देख लें या लड़के क्रिकेटर्स देख लें, उनको उनके बॉलर्स और ऑलराउंडर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है डोमेस्टिक क्रिकेट में। और बहुत अच्छे 2 रन्स। जी हाँ, ये ज़्यादा बड़ा मैदान नहीं है, लेकिन बाबर आजम की यहाँ पर हमें दौड़ की और उनकी फ़िटनेस की तारीफ़ करना पड़ेगी। बहुत उन्होंने मसरूफ़ रखा हुआ है बाउंड्री राइडर्स को। बिल्कुल, और फहीम अशरफ के आने से जो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से भी जो थोड़ा सा भी बाउंड्री से ऊपर नीचे आके रन्स हैं वो पूरा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 14 ओवर के बाद 119 पे 2 आउट।
मौसम में तब्दीली के आसार हैं। सेंट्रल पंजाब कोशिश कर रहा है कि उनकी किस्मत भी बदल जाए। यहाँ जनूब से शुमाल आकर तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम उनको रास नहीं आया था। पहले दिन ये दोनों टीमें जीत गई थी बआसानी। वहाँ पर बाबर आजम छक्का लगाना चाहते हैं और फील्डर देखते रह गए। एक बार फिर बड़ी अच्छी टाइमिंग बाबर आजम की और इस बाउंड्री को आसानी के साथ उन्होंने क्लियर किया। और बहुत अच्छी बैकलिफ्ट आप देखें, फॉलो थ्रू देखें, बैलेंस देखें, ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन। बहुत कोई फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस बॉल को पकड़ने का। बाबर आजम ने अगर 160 या 160 प्लस का अगर टारगेट ये चेज़ कर रहे हों तो इन्होंने कभी मैच विनिंग लिस्ट सेंचुरी स्कोर नहीं की, लेकिन आज ये मैच विनिंग सेंचुरी भी हो सकती है। यहाँ पर ये पेशरफ उसी के लिए है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही इम्प्रूवमेंट आ रही है बाबर आजम में एज ए प्लेयर। इनका स्ट्राइक रेट ऊपर जा रहा है, T20 में हमने देखा। और ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद में ये मौजूद है। यहाँ बड़े खूबसूरत मकामात यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस्लामाबाद आकर जो रावलपिंडी से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है पाकिस्तानी कैपिटल। खूबसूरत शॉट ऑफ द बैक फुट। बाबर आजम ये जंग जीत रहे हैं शादाब खान के खिलाफ। पहले छक्का लगाया ऑन साइड में, अब चौका लगाया ऑफ साइड में। बिल्कुल 2 छक्के लगा चुके, एक पिछले ओवर में, एक इस ओवर में। और इस शॉट को अगर आप देखें तो थोड़ा सा लेट खेला है ताकि थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से इसको खेला जाए। तो थोड़ा सा वेट ट्रांसफ़र किया, वेट किया और थोड़ा लेट खेला ताकि उस गैप में डालें जिस गैप को उन्होंने देखा हुआ था। और काफ़ी अच्छी अंदर बैंटर चल रही है दोनों के दरमियान। शादाब खान को खातिर खा मदद नहीं मिल रही इस होम पिच से। हालांकि 2 विकेटें इन्होंने ली थी एक ही ओवर में। बहुत अच्छे दिखाई दिए थे मुल्तान में, अपनी बॉलिंग फॉर्म को बहाल कर चुके हैं, लेकिन पिच से मदद ना होने के बराबर है। और इसका शादाब को अंदाज़ा PSL में भी हो गया था, जहां पर जिन 4 मैचों का फैसला हुआ रावलपिंडी में, चारों बार दूसरी बैटिंग करने वाली टीम जीती थी। इसलिए थोड़ा सा हैरानकुन था। मिस फील्डिंग हैरानकुन नहीं थी, सुहेल तनवीर थे, लेकिन इमाद वसीम का फैसला टॉस पर सना। बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह की इनकी टीम का मोमेंटम जा रहा था उस वक्त बेहतर यही था कि ये विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखते। और जिस तरह ग्राउंड का भी और इनकी अपनी स्ट्रेंथ रही है कि चेजिंग बहुत अच्छी स्ट्रेंथ से इन्होंने की है, तो काफ़ी हैरानकुन फैसला था। वाइट गेंद, एहसन रज़ा ने पहले आवाज़ लगाई, फिर इशारा दिया इस पार्टनरशिप को तोड़ने की ज़रूरत है, वरना 31 गेंदों में 33 रन ये आजकल के क्रिकेट में ये कोई मुश्किल हदफ नहीं है। फहीम अशरफ ने 1 रन लिया और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर में 134 पर 2। जिस वक्त सेंट्रल पंजाब की इनिंग्स शुरू हुई थी उन्हें 8 से ज़्यादा की औसत दरकार थी, और अब जो रिक्वायर्ड रेट है वो कम होकर 6.4 हो गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं नॉर्दर्न को। और सुहेल तनवीर आए हैं अब इस पार्टनरशिप को तोड़ने की गर्ज से।
अच्छी बॉल, डॉट बॉल से ओवर का स्टार्ट किया और इससे ही बाबर आजम की और उनकी क्लास का पता चलता है कि 6 के 6 बॉलर्स जो इस वक्त नॉर्दर्न यूज़ कर रहा है वो पाकिस्तान के नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और जिस प्रोफेशनल तरीके से विकेट्स इन हैंड रखते हुए और रन रेट को नीचे ले आए हैं 6 रन्स पर, ये एक इसी तरह की क्लास का बैट्समैन शो कर सकता है और कोई रैश शॉट नहीं मारी, सब क्रिकेटिंग शॉट्स। ऑन साइड में दायरे में एक ही फील्डर है फ़हीम के लिए, शादाब है मिड विकेट पर, ऑफ साइड में 3 है, 1 रन रोकने के लिए, लेकिन खूबसूरती से कट किया, पॉइंट से फील्डर आए लेकिन रोकने में नाकाम रहे। आउटफील्ड खासी तेज़ है, हालांकि बहुत ज़्यादा आपको घास नज़र आएगी, लेकिन गेंद को अच्छा टाइम भी किया था और गेंद ने ट्रैवल भी किया अच्छी रफ्तार के साथ। बिल्कुल सुहेल तनवीर की पेस का फ़ायदा उठाते हुए और आउटफील्ड का फ़ायदा उठाते हुए बिल्कुल गैप में बॉल डाला 4 रन्स के लिए फ़हीम अशरफ के लिए। काफ़ी खुश होंगे इस बाउंड्री के साथ। आबिद अली नज़र आए थे, वो नहीं खेल रहे आज। T20 क्रिकेट में ज़्यादा रास आई नहीं है ये फॉर्मेट। थ्रो नहीं लगी विकेटों पर। ये फ़हीम और बाबर आजम के आने के बाद ये इस टीम का हुलिया बिल्कुल ही बदल गया है आज। बहुत अच्छी कप्तानी की बाबर आजम ने, अच्छी उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की बर वक्त। फ़हीम ने एक ही ओवर में 2 विकेटें हासिल कर ली थी। बिल्कुल डिफरेंट यूनिट लग रही है, जैसे टीम की शक्ल ही बदल गई और आपस की अंडरस्टैंडिंग देखें, बड़ा चीकी रन था बट क्योंकि एक जब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है तो फील्डर्स पे भी प्रेशर आ जाता है, तो बड़ा अच्छा ये सिंगल भी लिया उन्होंने और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रन अप बॉल पे आ चुकी है अब जो चेज़ आपका रिक्वायर्ड रन रेट है। इस बार दूसरा रन लेना चाहते हैं बाबर आजम, ये खतरनाक हो सकता था। अच्छी फील्डिंग देखने में आई लॉन्ग लेग से। बाबर आजम एक टेस्ट सेंचुरी भी बना चुके हैं। आबिद अली और इनकी जो पार्टनरशिप थी श्रीलंका के खिलाफ बहुत दिल जीत लिए थे। पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हो रही थी एक अरसे के बाद। तारिक भाई आपका तो एक कंप्यूटर वाला माइंड है, आपको ऑन फिंगर टिप्स ये सारे रिकॉर्ड्स याद हैं। डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इस टूर्नामेंट के लिए, सेंट्रल पंजाब के लिए कि ये मैच सेंट्रल पंजाब जीते। और स्मैश किया इसे और गेंद बाउंड्री के बाहर जा गिरी। ये फ़हीम अशरफ का फेवर्ड एरिया है, बहुत खूबसूरती के साथ खेलने में कामयाब हुए। थोड़ा सा आप देखें, थोड़ा सा लेंथ बॉल पीछे था और बहुत ही अच्छा पिक किया फ़हीम अशरफ ने। बहुत अच्छा वेट ट्रांसफ़र, एक्सीलेंट फॉलो थ्रू। जहाँ PCB और टक की जानिब से 10 दरख्त लगेंगे इस छक्के पर, जिसमें कोई शुबा नहीं था। उमर अमीन भी तवक्को कर रहे थे कि गेंद बाउंड्री के इस पार गिरेगी, उस पार नहीं। बहुत अच्छी क्रिकेट, सिंगल लेते हुए 16 ओवर के इख्तिताम पे 147 फॉर 2। This is the difference when you got the top batsman in the world into your side. 85 not out, and Central Punjab looks like they're going to just walk over this, beating the strongest side in the tournament. 19 of 24 required. This should be okay for Central Punjab. And also Fahim Ashraf coming into the side after that niggle that he had. Upish, but he'll beat the fielder. What timing on that. Look at the ball racing away. That's -4. On the up, it was a little bit outside the off stump. You saw the high elbow. He completely just flared his arms and just got a boundary there.
You could just see them building up on this partnership. As you see, it was on the up and just could have been a catch, but a little bit far away for him. Got a boundary there. You could just see by the intent, the way they just build on this partnership. Babar just stayed calm at the crease, let it rotate strike, got those odd boundaries in. Highest score of the game so far. Beautifully played by Central Punjab. This time he plays it off the legs. Back-to-back boundaries here for Fahim Ashraf. Brilliantly done. A different line from Mohammad Amir, but he's up to task. Yes, Amir sliding down the leg and just clipped off the pass by Fahim Ashraf. He looks like he wants to end the game early. You see, just playing with positivity. They had just had this inclusion of star power coming from Babar Azam and Fahim Ashraf, and they just took the game away from Northern. So 155 for 2. They're just 11 away now. That's better, but still a single is available. I think it could be a good thing for Northern here. If they end up losing this match, just you get a bit of a jolt. You don't think that you are, invincible. Just at the right time in the tournament, so you pull up your socks, you see your mistakes, and you correct them and head towards the semi-finals. Whereas this is the moment, as I was talking about earlier, that 10 games apiece for all these sides. So Southern Punjab and Central Punjab don't have that cushion available where they can lose any more matches. So this could be a great boost for them, because this is not just winning the match. This is comprehensively winning a match against the stronger side, which is a good bowling attack. Yes, earlier we were speaking about the keys to this game. How can Central Punjab win this match? Well, we spoke about the fact that having a top order, being there responsible in the end of the innings, that's what was lacking in the few games prior for Central Punjab, where there was set batsmen who did not finish off the innings. Just by the inclusion of Babar, he just took responsibility. Like, I'm going to finish this game, I'm going to come not out. And with Fahim Ashraf finally playing a game, just the start, 42 already, just looking good. That's up in the air, will go over Ruhail. He's got to give it a chase. The ball, yes, it's always going to win that. These are the regions when you just get those top edges. Very tough for the keepers to give a chase there, especially with those pads on. Yes, the bouncer just snuck up on Fahim Ashraf there, well directed. This top edge could have gone anywhere, but when it's your day, when it's your luck, you're going to get that as a boundary. There's frustration on Mohammad Amir's face. Shows clearly. You do the maths here. Minus Babar from the equation, and they'll require 90 runs off 20 balls. Top edge. Oh, he's just tried, but just not enough. It's gone over. That's the big over, this. And that's the end of the game as well. You got 3 boundaries and a 6, and they have completely run over the opposition. They've steamrolled them. 167 for 2 in just 17 overs. Wow, 18 balls to spare. This is the end of the 10-match winning streak by Northern, getting defeated today by Central Punjab easily. Now, usually we were seeing how it was difficult for Central Punjab to chase, but finishing this match marvelously 3 overs before just shows the initiative Babar Azam took and just played a beautiful inning from the start and just showed his responsible confidence, maturity at the crease. Big win for Central Punjab. I always mention it's not how you start off the tournament, it's how you end it. Northern is still a good side. Finally, their 10-match winning streak is over. But very good look for Central Punjab with the second stint in Rawalpindi. Now, as you see, just another bouncer, top edge for 6 from Fahim Ashraf. Just clearly showed his confidence, just showed how when he just watches the ball, he just wanted to play his shots. He's an aggressive batsman who came up the order, first game in, and just showed his class, why he is Pakistan's all-rounder. They took good initiative today, and you could just see the way how composed Central Punjab looked. First 2-3 overs of the power play, just 9-10 runs. But just having wickets in hand,
building a partnership, being responsible in the middle overs. They just finished this game 3 overs so easy. Once again, Northern shuffling up the batting order. Everyone shaking their hands in good spirit. The weather has changed in Pindi. Now, it's still good signs for Northern as they still were under pressure for the first time in the middle overs this time. But the way Asif Ali counter-attacked, they should still take some positives out of this game because Northern is still the side to beat. As you see right there, a very good start. Babar Azam first game in for 86. Kaman Akmal was very lucky for 21. But Fahim Ashraf just came in, showed that nobody else had to come bat. He was going to hold Babar's hand.